Kritika ma'am and Darshi ma'am, we are live on YouTube. Okay, sir. Kritika, I think we can start. You can start the record and record to cloud, and then we can begin. So good morning to one and all. I welcome every one of you for the CSIR-NET Life Science Crash Course, Day 7 workshop. I would like to introduce to Dr. Preetham Joshi for the session. He is our expert for plant tissue culture. A brief introduction to Dr. Preetham Joshi. His PhD from Mohanlal Sukhadia University, Udaipur in plant biotechnology. He has an experience of 15 years in teaching and he has cleared his CSIR-NET Life Science 2 times. He has 15 publications and one of the major research project of GSBTM. He has completed it and participated in 31 national and international conferences. He has organized 4 national conferences sponsored through UGC, DST, DBT and GSBTM. He has availed DST travel grant to attend international conference at Belgium, and the area of research is plant tissue culture and plant biotechnology. 3 of his students are currently pursuing PhD under his guidance. I welcome you, sir, and without wasting much amount of time, I would request you to take over the session. Thank you, sir. Thank you so much, madam, for nice introduction. And I'm really thankful to the Navrachna University, Dr. Darshi madam, and all the staff for providing me this opportunity to be with the students of Navrachna University and share my knowledge on plant tissue culture. So without any further ado, I would like to start my lecture. So the screen is visible to? Yes, sir, it is visible. Shall I start? Yes, sir, you can start. So, dear students, as madam introduced that I have done my PhD in plant tissue culture and my area of research is also in plant tissue culture. So I would like to justify the topic. Today I'm going to take the topic basics of plant tissue culture, and you might have seen many questions in CSIR-NET that are pertaining to the plant tissue culture. And I hope after completion of this lecture, you will be able to attend all such types of questions which are related to plant tissue culture. And you might have also studied this same topic in your UG classes or in your PG classes. So I will move a little bit fast because this is just a revision, and just to concise the whole tissue culture in 2 hours is really a tough task, but I hope that you all have already studied the same topic at your undergraduate and postgraduate level. So it will be easy for you to revise those things which you have gone through previously. So basically, plant tissue culture, you all are aware that it's a technique of growing a plant or plant part under in vitro conditions. Okay, so a very simple definition of plant tissue culture, which can be understood by even a layman, is that just to grow any plant or plant part under controlled environmental conditions. Okay? So controlled environmental conditions means if you compare a plant which is growing in the field or in vivo conditions, there the environmental conditions are not controlled. So environmental conditions, what are the environmental conditions? Like the nutrients, the sunlight, the availability of oxygens and other gases, and the humidities, and the presence or absence of any parasite or other microbes, that all are the environmental conditions which cannot be controlled in the open field conditions or in vivo conditions. So when we take a plant or plant part and provide
all those environmental conditions in a controlled manner. Okay, say for example, if we talk about the temperature, if we control the temperature where this plant part is growing, then that is termed as the controlling the environmental conditions. Similar way, if you provide the artificial nutrients, okay, nutrients which you have prepared by yourself and you are providing it, and you have calculated and providing a measured amount of a particular nutrient. So that is again controlling the nutrient concentration and types. Similarly, humidity, if you are controlling, then also it is termed as the controlling the environmental conditions. So if you take a plant or plant part and grow it under controlled environmental condition in a laboratory, then that process is termed as the plant tissue culture. Okay. So generally, this concept of tissue culture, first of all, arise in the brain of one of the prominent scientists, that is Gottlieb Haberland, in 1900, who is regarded as the father of plant tissue culture. So it's just a 100-year back in 1900, the Gottlieb Haberland, sorry, proposed a hypothesis that it's possible to grow a plant cell, single cell, even not even the plant cell, but any cell, bacterial cell or animal cell. You can separate the cell, and artificially you can provoke the cell to divide, to grow, and ultimately to convert into the whole organism. That concept is termed as the cell totipotency, and that cell totipotency concept, the hypothesis was proposed by Gottlieb Haberland, and he also tried to prove this hypothesis by taking the cells of Limum purpureum. So he took the single cell of Limum purpureum, and we tried to grow it in an artificial medium in a laboratory conditions, and that artificial medium which he chosen, that was made up of certain inorganic salts. Okay, so and he added certain sugars, and though he was not aware about the exact and actual requirement of a plant cells. Okay, so he took the salt solution. In that he added a few inorganic salts. Okay, and then he put a single cell of Limum purpureum, and as he hypothesized and he presumed that this cell will divide and ultimately give rise to a complete plant of the Limum purpureum. Unfortunately, he failed to prove this hypothesis because that time he was not aware about the different cell growth regulator, plant growth regulators. Okay, so the medium which he has chosen, that was not sufficiently a potent medium which can allow the cell to divide and to grow. Okay, but the cell which he took for his experiment, that survived for complete 1 month, and that enlarged in size but did not divide. So there are several factors behind the failure of the Gottlieb Haberland, but this is the truth, that he attracted this several scientific community, that this can be possible, and several scientists of that time started to work in that area and tried to prove the concept of cell totipotency. And finally, two scientists, and one was from India, that is Professor Vimla Vasil and A.C. Hildebrand, in 1965 ultimately proved that concept of cell totipotency, because by the time of 1965, the discovery of many important growth regulators and a defined media was completed, and they took the single cell of tobacco and proved that concept of cell totipotency in the plants. Okay, they developed a complete plant of tobacco by using artificial medium and in controlled environmental conditions. Okay. So this is the basic question which can be asked from this. Nowadays, these types of questions are generally not asked, but these are the basics which you should be aware, that who gave the concept of cell totipotency, or who is regarded as the father of plant tissue culture. So the
Sir Gottlieb Haberland is regarded as the father of plant tissue culture. If you have visited the Bangalore University, Agriculture University, the botany department, then you will find that a bronze statue of Gottlieb Haberland is there, and you will see the in the honor of Gottlieb Haberland. Similarly, who demonstrated the cellular totipotency using single cell culture. So as I described that the concept which was proposed by Gottlieb Haberland in 1960 and 1900, that was actually experimentally proved by Dr. Wimla Vasil and A.C. Hildebrand. A.C. Hildebrand was a professor at Wisconsin University in USA, and Wimla Vasil was a pass out of Delhi University. You might have heard about Professor Vasil I.K. Indra Kumar Vasil. I.K. Vasil and Wimla Vasil, they were husband and wife. They were later on moved to Wisconsin for their further studied and research. And Wimla Vasil was the Indian scientist who proved this concept of cell totipotency in 1965. Which of the following plant cell will show the totipotency? So one of the major reason behind the failure of Gottlieb Haberland was he has chosen the Linum purpureum mesophyll cell. So mesophyll cell is a highly differentiated cell. Okay. So when you take a highly differentiated cell, a cell which have already crossed a level of differentiation, and it is in an advanced state. So to convert a cell which has already reached to an advanced state of differentiation, to revert back to the primitive state, that is really a difficult task. So that was another major reason behind the failure of Gottlieb Haberland. So this thing we should keep in our mind, that a cell which is having a potential to differentiate, that can easily get differentiated. Okay. So normally, if you see the 4 options in this third question, which of the following plant cell will show the totipotency? Okay. So the concept says that every cell has the potential of showing the totipotency, but a cell like the option A, xylem vessel, which is highly differentiated cell. Similarly, the sieve tubes, okay, and Koch cells. Koch cells are the dead cells. So there is no question of differentiation in the dead cells. But the sieve tube and xylem vessels, these are the highly differentiated cells that already have reached to a level of differentiation. So the reverse process of attaining a primitive state is not possible in case of these two. So meristematic cells are those potential cells, like in case of human or animals, the stem cells. Okay. So stem cells are very potent cells which can undergo the differentiation. If you take about the animal system, the nerve cells are highly differentiated cells. So if you provoke the nerve cell to convert into a primitive state or any other type of cell, then it is quite difficult, because it has already attained a high level of differentiation. The inner environment of the cell and the expression of certain genes has already been taken place. Certain genes has already shut down. So there is not possibility of reverse differentiation in the nerve cells. Likewise, the vessels and sieve tubes cannot also be converted into the other types of cells, or it cannot divide. The meristematic cells are those special, that type of cells which has still a potential to convert and to divide and to morphogenesis, to undergo the morphogenesis process. Okay. So totipotency will be shown by the meristematic cells. Now come to the different applications of plant tissue culture. You might have heard about certain applications, like the most important application is of plant tissue culture is micropropagation. So all the laboratories and the industries throughout the world which are producing commercial crops and commercial plants, horticultural plants, floricultural plants, silviculture and medicinal plants through the tissue culture, they are basically doing the micropropagation. So don't get confused with the micropropagation and plant tissue culture. Plant tissue culture is a broader term. Okay? While the micropropagation is an application of plant tissue culture. So if you are able to
keep a cell alive for certain period of time, okay, though the division is not taking place, and that cell remains alive, then that is termed as the cell culture or tissue culture. You can take a tissue, you can take a single cell, or you can take a complete plant, and in artificial condition, if you are able to keep that cell alive for period of time, then that is the tissue culture or cell culture. Okay. But what is micropropagation? Micro means you take a small part of the plant, okay, it may be a single cell also, and you not only keep it alive, but you also induce to propagate it. Propagate means to multiply, okay. So if the cell divides and multiply, and at the end it will give rise to the new plantlets, then that is termed as a micropropagation. So basically the definition already is included in the plant tissue culture or plant cell culture. So plant cell culture is a broader term where our objective is to keep the cell alive. So similarly, you might have heard the preservation is a different term. So you like you can take example of this pickle making. Okay, so what your mother or grandmother do, they take the fruit part, okay, and they don't bother about the liveliness of that part. They keep it in the salt and in the oil, and now what happens, the cells may die, but they will remain fresh in the sense they will not get contaminated, and later on after a certain period of time you can consume it. So preservation means to stop the decaying. The plant part should not decay. Okay, and decaying is the process which is generally carried out by the microorganisms. Okay, so you keep it free from microbes by putting it in the oil or by putting it in the salt water or whatever the method you are using. That is termed as the preservation. You might have heard about you might have seen certain specimens, animal specimens in the zoology class, they put it in the formalin. Okay, so formalin is also a chemical which keep the structure and the tissue of that animal without contamination and stop the decay. Okay, so to stop decaying or to keep the tissue in its original state without bothering about the liveliness of the cells, that is termed as the preservation. So here we are, the preservation and culturing, these are the two complete different things. Okay, so micropropagations means it is also a part of an application of the plant tissue culture, where we are not only keeping the cell alive, but also we are inducing the division in the cell and tissue. Okay, so the application of micropropagation you already have seen in many industries. There are several tissue culture based industries in the Gujarat also, where banana tissue culture and pomegranate and date palm and all these things are going on. So that is all the micropropagation. Micropropagation itself has several examples like silviculture. Okay, silviculture means to promote the forest, to do the micropropagation of the forest plants. Similarly, medicinal plants, there are several medicinal plants which are also propagated through micropropagation. There are certain spices and condiments which are propagated through micropropagation. There are certain threatened plants, like you might have heard about the this Chlorophytum borevillianum, Boswellia serrata. Okay, with this Feronia limonia. Okay, so Rhytia tomentosa, Rhytia tinctoria, these all are the threatened plants, okay, which are not in sufficient number in the forest in their natural environment. So these plants are propagated through the micropropagation, and later on they are transported, they are replanted into the forest. Gujarat Forest Department, even the Rajasthan Forest Department, they all have already established the tissue culture units, and they are promoting the micropropagation of these types of threatened plants. Okay, floricultural and horticultural plants. Okay, floriculture means flower producing plants like rose,
gerbera. Okay, these all plants which you see in the bouquet and in the garlands like marigold, okay, alocasia. These all are the floriculture plants which are produced through your that Christmas Araucaria Christmas tree. Okay, these all are the floricultural plants which are decorative plants and used for decoration and aesthetic purpose, and they are produced through tissue culture. Horticultural plants, fruit yielding plants like banana, pomegranate, date palm. Okay, your papita. Okay, these all are the horticultural plants. Similarly, in plant pathology, there are certain applications of tissue culture, like through meristem tip culture. I think you all are aware about the meristem tip culture. That is a method for elimination of the viruses. Because the reason behind meristem tip culture, I think you all are aware that meristem is the part where the infection of virus cannot take place. Otherwise, whenever the infection of virus takes place, the virus get transmitted to all the organs, leaves and fruits and flowers and everywhere. But the meristem is the tissue where the virus infection generally do not take place. There are three important reasons. First, the meristem tissue is not directly connected with the vascular bundles. And as we all are aware that the virus transmit through the phloem, and the meristem is not directly connected to the phloem. So first chances of or the probability of transmission of virus is minimum. Second thing, if somehow the virus enters to the meristem, then there is a very little or no intracellular space which is present in the meristem or the tip part of this plant. So the virus do not find a place to reside. Okay? That is the second important reason. And third, the highly metabolic activity of meristem tissue do not allow to divide the virus inside the merismatic cells. So due to these three important reasons, sometimes these reasons may be asked in the examination. So you should be aware about these three important reasons. Due to these three important reasons, the meristem tip is always virus free. So we can take the tip from even from a viral infected plants, and you can separately culture it in the laboratory, and the plant which will develop from this meristem tip will be virus free. So this is one of the important application of the tissue culture in plant pathology. Likewise, screening of germ plaques, culture of obligate parasites, cell line selection, these all are other applications. Similarly, in conservation of ex-situ conservation, synthetic seed production, as you are aware, synthetic seeds can be produced by taking certain buds or merismatic part of the plant, and later on these seeds can be germinated and then they can be transplanted to the field. Cryopreservation means at ultra low temperature you can preserve a plant part or explant, and later on the plant part can be transferred to the medium and new plants can be generated. Similarly, in crop improvement like embryo culture and embryo rescue. So you are aware about the embryo culture and embryo rescue. Embryo culture is important, especially when you are doing certain breeding like experiment under interspecific or intergeneric crossing. Okay, because the sexual incompatibility is the phenomenon which do not allow such type of wild crosses. Okay, so suppose if you take if you wish to cross the potato with the tomato, so the sexual incompatibility phenomenon, a natural phenomenon, do not allow such type of crosses. If the cross takes place, the fertilization takes place, then the embryo which is formed, that is an abnormal embryo which cannot grow or which cannot develop, right? So such type of embryo can be excised from that part, and later on that can be allowed to grow separately on the medium, and the new hybrid can be developed. So that is the embryo culture and embryo rescue. Endosperm culture also you can do for the particularly for the development of triploid plants. Protoplast culture, that also we will discuss somaclonal variations. So what is somaclonal variations? Somaclonal variations means the variations which arise during the tissue culture.
Generally, it is presumed that when you are taking the explant or plant part, which is already somatics, 2N, somatic cells, then since there is no meiosis, so no recombination, so there should not be any variation in the progeny, next progeny. That is our prediction. But many a times, due to soma-clonal variations, uh, the next progeny differ from the parent plant. Means the variations occurs. Okay, so opposite to our prediction, the variation which arise during the tissue culture period and due to the in vitro conditions, that is termed as the somaclonal variations. The one important thing about the somaclonal variation is that the somaclonal variations are heritable, means they can be transported from one generation to the next generation. Okay, they are stable. Okay, and they can be transported to the next progeny. When they are permanent, it means that there's something which is taking place. There is something changes which is taking place in the genome. जीनोम में चेंजेस किस किस कारण से हो सकते हैं? कोई ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के कारण हो सकते हैं या कोई म्यूटेशंस के कारण हो सकते हैं. सो ऑलवेज देयर शुड बी द रीजन फॉर द वेरिएशंस will be which will be related to the DNA or genes. Okay. So yeah, याद रखना है, androgenic haploids are anther culture for the production of haploid plant. The tissue culture is important. Okay, you might have done the experiment of development of haploid through Daturinoxia, a very famous experiment which was carried out by again 2 Indian scientists, S.C. Maheshwari, Satish Chandra Maheshwari, and her student Shipra Guha Mukherjee. So both were in the Delhi University last year or before last year. Professor S.C. Maheshwari passed away, and Shipra Guha Mukherjee was her student, and that was a major breakthrough discovery, which was also regarded as a breakthrough discovery in the history of plant tissue culture. That paper was published in Nature that time. Secondary metabolite production. Again, the secondary metabolites are very important metabolites, and generally all the medicinal plant, the principal compound or which is responsible for that particular medicinal value or property of the plant is secondary metabolites, generally alkaloids, okay, terpenoids, phenolic compounds, these all are the secondary metabolites. Generally, all these secondary metabolites are produced in a very low quantity or low amount in the plant, and they are restricted to certain tissues. Okay. Say, for example, vincristine and vinblastine, these are the 2 important alkaloids which are accumulated in the roots of the Catharanthus roseus. In the Catharanthus roseus. So these alkaloids are accumulated in low quantity and synthesized in very low amount. Say, for example, when you exploit 1 ton of the dried root of the Catharanthus roseus, you will be able to extract only 25 milligram of the vinca alkaloids, vincristine, vinblastine. These vinca alkaloids are very potent anti-cancerous drugs. So now you have only one option, that these drugs are also very essential, very much required for the well-being of the human. Okay, so what is the option? You can sacrifice the plants, okay, and separate the roots and finally extract the product. But this has a major disadvantage. The disadvantage is that soon or later the plant will become threatened. Okay, limited number of the plants. Say, for example, if we talk about this Chlorophytum borevillianum, okay, with a very immense medicinal plant, okay, and it contains approximately 18 to 20 different saponins and alkaloids, which are used for preparation of many important drugs. But our exploitation of these plants now have resulted into that this plant has become extinct. Okay, in the Aravalli forest or in the Gir forest, you are not able to find this Chlorophytum borevillianum plant.
Okay. Similarly, यदि आप देखें बॉसवेलिया सिराटा, okay, so boswellic acid मिलता है. Once this plant was a keystone species in the Aravali and in the Gir also, but now you cannot see the plant because the seed viability in these plants is 0.02%. So 1000 सीड बनाएगा प्लांट तो उसमें से 2 प्लांट के सर्वाइव होने के चांस होते हैं. So इस कारण से क्या है कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, अनमाइंडफुल डिस्टर्बमेंट हो रहा है. सो वी कैन टेक द प्लांट पार्ट एंड ग्रो इट इन द लेबोरेटरी and without sacrificing the plant, now you will be able to extract and produce the same important principal compound without harming the plants. Okay, so you can produce the secondary metabolites, that is immense application. Similarly, production of the transgenic plants, whatever the transgenic plants you develop, जैसे हम बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ओके, ये सारे प्लांट्स के बारे में आप जानते ही हैं आप लोग. So whatever the transgenic you are doing, the tissue culture is an important step. So without bypassing the tissue culture, you will not be able to produce a transgenic plant. Okay? Because always the incorporation of the foreign gene can take place in a limited tissue or limited number of cells. आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई प्लांट ग्रो हो रहा है तो जाकर के उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल है, हर सेल के न्यूक्लियस में जाकर के आप डीएनए इंसर्ट कर दें. इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. सो व्हाट यू डू, यू टेक ए पार्ट. ओके, वेदर इफ यू आर गोइंग थ्रू agrobacterium mediated transformation or through particle gun bombardment or micro injection, whatever method you are using, you can carry out this transformation in a limited number of cells, okay, in a portion of the plant, okay, and finally that limited number of cells which get transformed should have ability to convert and give rise to the complete new plant. यदि आपने 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर का एक लीफ का पार्ट लिया, उसमें आपने पार्टिकल गन बम्बार्टमेंट किया, उसमें कुछ सेल्स ट्रांसफॉर्म हो गई. So you have to pick those cells, transform cells, and then finally from those few cells, the complete plants needs to be developed. So इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? By taking those few transformed cells, you can develop a complete plant. यही तो micropropagation. By taking a few cells, if you are able to develop a complete plant. But यहाँ पे आप transform cell से कर रहे हैं. So in transgenic science, the tissue culture is an essential step. So पहले यदि आप जब भी transformation कर रहे हो, there must be a protocol for tissue culture for that particular species should be there. Okay. So these are the few important applications of plant tissue culture. I think we all are aware about all these techniques. So it is just for revise the things. Now the question which can be asked from this part is like, which of the following is not an application of plant tissue culture? So micropropagation, definitely it's an application. Meristem tip culture की हमने बात की. This is for elimination of virus. Bulbosum method is also a method of tissue culture where Herdium vulgar and Herdium bulbosum are crossed and the hybrid is developed through tissue culture. So that is also a tissue culture method. Hydroponics is not a tissue culture. So many times these students get confused. Okay, hydroponics में भी हम ऐसा कांच के कुछ में या इसमें प्लास्टिक में कुछ ग्रो कर रहे हैं तो ये tissue culture है. No. Because initially I told you that the definition of tissue culture is what? To grow a plant or plant part under controlled environmental conditions. Hydroponics में environmental conditions partially controlled की जाती है. Okay, not completely. आप उसको open environment में रखना. You provide Hogland solution which is a, you can say, a slightly controlled conditions. Okay, आप उसमें Hogland solution दे रहे हैं, but temperature, ह्यूमिडिटी या ऐसा कुछ भी माइक्रोब्स का कंटामिनेशन को ऐसा कुछ भी मेजर्स नहीं लेते हैं. हाइड्रोपोनिक्स इज नॉट ए टिश्यू कल्चर, इट्स ए कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्लॉइड प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय. सो ट्रिप्लॉइड प्लांट्स, डू एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम? Okay,
So triploid plants, so triploid, like banana is a triploid plant. So whenever your objective is to produce a triploid plant, you will select the material which is already diploid. Okay. So anther, we all know, outer wall is diploid and inner anther producing cells, okay, they are haploids. Okay. So anther culture हम haploid production के लिए करते हैं. Ovule culture, as you all are aware, ovule is also for haploid production. Endosperm, okay, एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर. तो यदि आप एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियोलॉजी देखें तो एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियोलॉजी पर्टिकुलरली जो मोनोशियस प्लांट्स हैं, मोनोशियस मीन जिसमें बाइसेक्सुअल प्लांट है, मेल फीमेल दोनों पार्ट एक ही फ्लावर में है, तो उसमें जो पिस्टी है, पिस्टी मीन्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द एंजियोस्पर्म दैट कंटेन्स स्टिग्मा, स्टाइल. ओके. Ovules are arranged in a particular fashion, and that particular arrangement along with all the ovules, that is termed as the ovary. Okay. So in each ovule, okay, there is a funicles, nucellus, chalaza. Okay, all this part you are, I think, aware. So in that, the female reproductive cells divides and give rise to 7 cells and 8 nucleated structures. So there are 3 antipodal cells, there are 2 synergids and 1 egg cell. So when that pollen tube fuse with that ovule and then discharge the 2 pollen grains, the 2 male nuclei, the 1 male nuclei get fused with the egg cell and the another male nuclei get fused with the central cell, and it forms the endosperm. So endosperm is triploid because there are 2 nucleus already present and 1 male nuclei is coming from the pollen tube. Okay. So endosperm is triploid. So triploid plants can be produced through the endosperm culture. Very popular example of this endosperm is your coconut water. Coconut water is a liquid form of the endosperm. Which of the following factor may be the cause of somaclonal variations? As I told you, somaclonal variations are those variations which develop during the tissue culture, and they can arise as they are stable, okay, and can pass from one generation to the next generation. So transposable elements, the chromosomal eliminations, mitotic crossing over, all these factors which may responsible for the mutations are also responsible for the somaclonal variations. So the answer for this is all of the above. Now come to the one of the important applications for tissue culture, that is micropropagation. As I told you, micropropagations means to propagate a small plant part. Micro means a small area of glass or vessels or plant part, and to propagate and mean to increase or to multiply. So in a small area, if you take a small plant part and if you provoke that small plant part to divide and to multiply, and finally you will be able to develop the complete plants in high number, and this process is termed as the micropropagation. Okay. So there are several pathways of micropropagation, like enhanced axillary branching pathway, adventitious shoot bud differentiation, somatic embryogenesis, and callus organogenesis. Okay. So we will discuss one by one all these pathways. So first is enhanced axillary branching pathway. Okay. So when सबसे पहले तो micropropagation किसको कहा है? I repeat it once again. In a micro means small area in a glassware, okay, like in tissue, like in test tubes, sugar tubes, or in culture bottles. In a small environment or small area, take a small plant part. So that small plant part which you use as a starting material, which is termed as explant. So if we take an explant, transfer it in a small area on an artificial medium, and then we induce to propagate, to multiply. Okay. So
So when your small plant part or explant is containing pre-existing meristem, pre-existing meristem कहाँ हो सकता है, जैसे आपके nodal segments में जो dormant buds हैं, okay, that also contain the pre-existing meristem, and you have added something which provoke these buds to develop into the new shoots. So in this diagram, you can see that these buds give rise to the new shoots. Okay. So this type of practice where the explant which we are using for micropropagation is already containing pre-existing buds, okay, pre-existing meristematic tissue, that is termed as enhanced axillary branching path. Okay. What are the different steps that also we will discuss? Similarly, adventitious shoot bud differentiation. So if you take a plant part or explant which do not contain the pre-existing buds, but under the influence of the plant hormones or plant growth regulators, the non-meristematic cells gives rise to the new shoots, or the non-meristematic cells give rise to the new shoot buds, then this type of pathway is termed as adventitious shoot bud differentiations. So here, this all are the figures from our own labs. So in this first figure, this is the explant of Rhytia tomentosa, okay, जिसको खिरनी बोलते हैं, इकोनॉमिक प्लांट, ओके, जिससे आपके इसको टॉयवुड ट्री भी बोलते हैं, एंड दिस इज वंस अपॉन ए टाइम दिस ट्री वाज वेरी मच prominently found in the southern Aravalli and southern Rajasthan region, but now due to, as I told you, now due to the over exploitation, because it has some economic value, so people cut it. Its wood is very soft, you can carve it in any toys. So in the southern Rajasthan, particularly in Mewar, like Udaipur and all, you will find the wooden toy, okay? Wooden toys, and that Kathputli. So that industry is very prominent. So people used to take this wood for preparation of this, for selling these toys. So our exploitation of this plant took place, and now this plant is endangered. The trials were done in our lab for restoration of the germplasm of this plant. So we successfully established the protocol for tissue culture of the Rhytia tomentosa. So you can see here, by taking the nodal explant, development of the new shoots is taking place. Similarly, this is the internode. Internode means the part which is residing between the two nodes. Nodes means जहाँ से branching हो रहा है. Internode means दो node के बीच का part, that is internode. Generally, internode do not contain the meristematic cells. So here you can see this is a very beautiful picture of क्या नाम है इस plant का, Annona squamosa, सीताफल. Okay, so Annona squamosa plant, okay, उसका internode से नए shoots develop हो रहे हैं. So this is the adventitious shoot bud differentiation. C is somatic embryogenesis. Sorry, ये जो D है ये C है, गलती हो गया है. This is the somatic embryogenesis. So this was also carried out in the grasses in our laboratory, in two important grasses, Thymida quadrivalvis. Okay, so because जो Poaceae family है उसके जो plants हैं, Gramineae और Poaceae, उसमें somatic embryogenesis बहुत अच्छे से होता है, इसलिए हमने इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखा था. Thymida quadrivalvis में somatic embryos देख रहे हैं हमने. Indirect somatic embryogenesis through callus we induced, and you can see here these are the globular stages of somatic embryos, and this is the cotyledonary stage of the somatic embryos. So when you take the, what is somatic embryogenesis? When you take the small explant, allow it to grow, okay, and
instead of formation of shoot, if the embryos develop, okay, so such type of embryos which are developing from the somatic cells, these are termed as somatic embryos. And when these somatic embryos has the ability to transform into the complete plant. There are two types of embryos, somatic embryos and gametic embryos. Gametic embryos are those plant. Someone has unmuted his or her mic, so I request to kindly mute. So these somatic embryos has ability to develop into the complete plant. So producing the plant through somatic embryogenesis, then this will be termed as genesis pathway. Fourth is callus organogenesis. You develop the callus, and finally from this callus, if the new plants start to develop, the new shoots develop, then this is termed as the callus organogenesis. This is the callus organogenesis which is taking place in the Peronia limonia. Peronia limonia, again an endangered plant. इसको कहते हैं हम wood apple, elephant apple या wood apple कहते हैं. Okay. इसका लोकल ट्राइबल नेम है कठोमड़ी जो जिसका अचार और मुरब्बा भी बनता है. आप लोगों ने बचपन में कभी खाया हो, जो गाँव के हैं उनको पता होगा. जैसा आपका होता है ना, तो शिव जी के मंदिर के आगे कौन सा प्लांट होता है, उसके जैसा ही दिखता है. बिल पत्र, बिल्ला जो होता है, बिल्ला का ये भाई सेम फैमिली, रूटेसी फैमिली का ही है. But the fruit is also very much similar with the elephant apple. Okay. Now come to the different stages of micropropagation. So whatever the pathway you follow, there are 4 important stages, like management of the donor plant, establishment of contamination-free culture, shoot multiplication and elongation. Stage 3 is rooting, and stage 4 is hardening and acclimatization in the soil establishment. Okay. Now, what are the different factors? इन सारे stages को हम आगे और discuss करने वाले हैं, इसलिए skip करता हूँ अभी. What are the factors which influence the micropropagation? There are different factors which affect the micropropagation, like what is the composition of nutrient medium, what the gelling agent you are using, what are the types and quantity of the carbon source which you are using, what are the auxin cytokinin interplay, and culture vessel environment. Okay. So first talk about the nutrients. Okay. So generally in tissue culture we grow the plant or plant part on an artificial medium, and the most famous medium you all are aware is the MS medium, Murashig and Scoop medium. So Murashig and Scoop, these were the 2 important scientists of Miyazaki University, Japan, and they first of all formulated and proposed a very defined medium for the plant tissue culture. Now it is very much famous medium, and it has one of the highest citation, more than 60,000 citation of this paper, the paper which was published in 1962. So far the citation of this paper is very much highest. That medium of Murashig and Scoop contain macro elements like nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur, Mg, Fe. Okay. So macronutrients means the nutrients which are required in the higher amount. Similarly, micronutrients which is required in a very low amount, like boron, molybdenum, manganese, cobalt. Okay, don't get confused with the manganese and magnesium. Okay, Mn means manganese is a micronutrient which is required in low quantity. Cobalt, zinc, copper, chloride, iodine, these all are required in very critical amount, but their presence is very much required. You cannot, their presence as well as their presence is required, but their higher quantity can also be very much toxic for the plants. So they are required in a very critical amount. Okay, not less than that, not higher than that. Okay. Similarly, the organic supplements which contain the carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen. Oxygen should be there in all the organic supplements, like sucrose is generally added, M-inositol, bio-inositol is added. Along with that, other organic supplements like vitamins like B12, B6, niacin also need to be added. Certain amino acids also have proved a
positive effect on the growth. And most importantly, the plant growth regulators like auxins and cytokinins, they play important role in the division and morphogenesis of the plants. Okay. Now, what the question which can be asked from this part is like, what is the role of these important elements which are added in the nutrient medium? Like nitrogen, as you all are aware, it's a component of protein. All the proteins are made up of amino acids, and amino acids, nitrogen is a essential component element. न्यूक्लिक एसिड में भी आप देख सकते हैं जो bases हैं, nitrogen bases that all contain the nitrogen. It also acts as some enzymes. Okay. Similarly, potassium, it regulates the osmotic potential, and principal inorganic cation in the plants, calcium. सारे cells की cell wall जो है plant cells की cell wall, that is made up of calcium and magnesium pactate. Okay. मेम्ब्रेन फंक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसके अलावा आपको पता होगा कैल्शियम इज ए इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मैसेंजर. सो इन सेल सिग्नलिंग कैल्शियम प्ले इंपॉर्टेंट रोल. Magnesium is an important enzyme cofactor. It's component of chlorophyll. Okay, C15C H6O5 and as last में Mg आता है. chlorophyll का आपने फॉर्मूला देखा होगा. Magnesium is a important component of chlorophyll. Phosphorus, न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फेट है, तो फॉस्फोरस एनर्जी ट्रांसफर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. कंपोनेंट ऑफ इंटरमीडिएट. ओके, सल्फर जो सिस्टीन और मिथ्योनिन इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स है, उसमें सल्फर है. ओके, क्लोरीन फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहा है. आयरन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एज ए कंपोनेंट ऑफ साइटोक्रोम. मैंगनीज एंजाइम कोफैक्टर है. कोबाल्ट विटामिन साइलोकोबालामिन जो विटामिन है उसमें कोबाल्ट है. कॉपर एंजाइम कोफैक्टर है. ETS में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जिंक भी है और मोलिब्डेनम भी इंपॉर्टेंट एंजाइम का कंपोनेंट है. पर्टिकुलरली नाइट्रेट रिडक्टेज का आपने नाम सुना होगा. For the assimilation of nitrate, molybdenum is essentially required. I will share this PPT with the madam, so she will pass it to all of you. But always just remember all the important function or the role of this important components of the medium. Many a times the question are asked from this part, like you can see here. The calcium deficiency in the plant results into which type of syndrome? Okay. So bitter picking, apple, blossom, and rot of the tomato, black heart in tomato, all of the above. Okay. So calcium deficiency is responsible for all this. Okay. This you have to memorize. Now, black heart of the tomato, आपने देखा होगा. Many times when you cut the tomato, the central part is black in color. Very important. Next question important. Lyme-induced chlorosis is induced due to the deficiency of what? Okay. Generally, chlorosis means deformed photosynthetic pigment and inability to perform the photosynthesis. That is termed as chlorosis. Okay. Generally, जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती हैं क्लोरोसिस में, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल का सिंथेसिस नहीं हो रहा है. तो क्लोरोफिल का सिंथेसिस नहीं होने के कई कारण हो सकते हैं, बट स्पेशली यदि आपने देखा हो कई बार फील्ड में, लाइम इंड्यूस मीन्स इफ यू एड लाइम इन द soil, then what happens? Generally the plant becomes stunted and yellow, and it is not able to perform the photosynthesis. So generally Lyme induced chlorosis is due to the deficiency of iron. Okay. Chlorosis के कई सारे कारण हो सकते हैं. Lyme induced is due to the iron. Why it happens? Because generally Lyme induced chlorosis do not takes place because iron is sufficiently present in the soil. Okay. In fact, iron is one of the important element which is present in abundant quantity, but the plant has ability to absorb the iron only on a particular pH. When the pH is neutral or is slightly acidic, then only the plant can absorb the iron. So what is Lyme induced chlorosis means? When you add lime means it's a base. So when you add the base in the soil, then the pH of the soil becomes basic. So in the basic pH,
the plant is not able to absorb the iron which is abundantly present in the soil. So this is an important question which may be asked in the examination. Similarly, whiptail disease in cauliflower is due to the molybdenum. This which you need to memorize that whiptail disease is due to the deficiency. कई बार पूछा गया है cauliflower में whiptail disease. Now come to the next important factor, which is the gelling agent. Thank you. What is the role of gelling agent? Generally, the gelling agent, you have to memorize, gelling agent do not have any nutritional value. Okay? Gelling agent play only important role in the providing a semi-solid medium so that your explant can anchored in that medium. Okay. Otherwise, what happens if you take the liquid medium, then the explant will sink, and the sufficient oxygen will not be able, hence the growth in the explant cannot take place. That's why we need to add gelling agent which make the medium semi-solid, and generally we use agar as a gelling medium. Okay, so in tissue culture, agar is added at 0.8 to 1% concentration. There are certain reasons behind using this agar as a gelling agent, because it is convenient, it is having convenient gelling ability, it is highly stable, okay, it is resistant to metabolism, and it is not toxic. The question जो आपको याद रखना है, agar is derived from which algae? So it is the red algae, Gelidium or Gracilaria, which is the chief source of agar. And agar is a monomer unit, and monomer unit in agar is the agaribiose. Agaribiose is made up of galactose and galactopyranose. Next important component or factor which affect the plant growth regulator is auxin cytokinin interplay. So these are added in a very low amount, but they play very critical role in the morphogenesis. Generally, two types of plant growth regulators are added in the medium, like auxins and cytokinins. These are the different examples of auxin: IAA, IBA, NA, 2,4-D, 2,4,5-D. Okay, cytokinins like zeatin, DAP, carnitine, adenine, sulfate, and 2IP. Okay, इस पे separately generally auxin cytokinins plant growth regulators आपको ध्यान से पढ़ना है. इस पे हमेशा एक आध क्वेश्चन आता है. जनरली मैं plant growth regulator पे एक सेपरेट लेक्चर लेता हूँ, लेकिन मैं आज कोशिश करूँगा उसको इसमें कंप्लीट कर सकें. There are certain plant growth regulators like auxins. Auxins हमेशा आपको याद रखना is responsible for cell elongation. Cell का size बढ़ रहा है, divide नहीं होता. Auxin always induce cell elongation. Okay. दूसरा आपको हमेशा रट के याद रखना है, auxin induced elongation in the cell can be explained through acid growth hypothesis. Okay. एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस क्या है, ये कभी टाइम मिलेगा तो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे. याद रखना, ऑक्सीजन इंड्यूस्ड सेल एलिमिनेशन इज कैन बी एक्सप्लेन्ड थ्रू एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस. सेकंड इंपॉर्टेंट ग्रोथ रेगुलेटर, दैट इज जिब्रेलिन्स. Zibrellins is a true growth hormone because it not only induce the elongation but also is responsible for cell division. So cell will not only elongate but it will also divide. तो जैसे हम समझ सकते हैं, यदि इनिशियली 100 सेल हैं, तो यदि आपने ऑक्सीजन ऐड किया तो आफ्टर द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ सेल तो 100 ही रहेंगे, लेकिन वो 100 सेल एलोंगेट हो जाएंगे. okay? उनका ड्राई वेट बढ़ जाएगा, फ्रेश वेट और ड्राई वेट इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन नंबर चेंज नहीं होगी. लेकिन जिब्रेलिन यदि आप ऐड कर रहे हैं तो सेल डिवाइड होगी. 100 से एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद 200 सेल हो जाएंगी और सेल एलोंगेट. तो ट्रू जो उसको कहेंगे ग्रोथ है वो जिब्रेलिन से.
Third is cytokinin. Cytokinin is specially responsible for division in the cell. Plus important जो उसका reason वो क्या बोलते हैं function है, that is it inhibits the senescence. Senescence को कहेंगे जीर्णता या बुढ़ापा. Okay, सेल को बूढ़ा नहीं होने देता है cytokinin. Okay, तो यदि fruit fall, leaf fall, okay, ये सब क्या, ये सब बुढ़ापे की निशानी. Okay, तो इसको आपको डिले करना है. Fruit fall, leaf fall, okay, leaves को mature होने से रोकना है. So you need to spray the cytokinins. Okay, so this is important, which you need to memorize. These three organs, gibberellins and cytokinins, are growth promoter. Means growth को promote करते हैं. Elongation promotion का example है, division promotion का example है, inhibition of senescence promotion का example. There are few important growth regulators which inhibit the growth, like abscisic acid. Abscisic acid is responsible for abscission of leaves, means leaf fall, leaf fruit fall. Okay, इनको इंड्यूस करता है abscisic acid. इसी तरीके से जो बर्ड है उनको डॉर्मेंट करना है, सीड को जर्मिनेशन से रोकना है. तो सारे जो नेगेटिव काम है वो करने हैं तो abscisic acid से. तो आप कहेंगे नेगेटिव मीन्स ये सर दिस इज नॉट गुड फॉर प्लांट. नहीं, कई सारे ये ग्रोथ इनहिबिट कर रहा है, लेकिन ये ग्रोथ इनहिबिट भी प्लांट के लाइफ साइकिल का इम्पोर्टेंट स्टेज है और एसेंशियली रिक्वायर्ड है. लीफ फॉल इज एसेंशियल फिनोमिनन व्हिच शुड बी देयर, होना चाहिए. इसी तरीके से फ्रूट फॉल होना चाहिए. Okay, so all these essential part are carried out by abscisic acid. So it is having equal importance like the growth promoters. So don't take it in a negative way. Abscisic acid perform the negative function, but it's essentially required. Likewise, ethylene, it promote the senescence, it promote the apinestic. कई बार आपने देखा होगा downward curvature of the leaves. Okay, that is the apinestic. इसी तरीके से ripening of the fruit. अभी अभी जो बड़े बड़े वार हाउस होते हैं, पोटैटो वार हाउस, फ्रूट्स के, एप्पल और उनके, जहाँ पे उसको स्टोर करके स्टोर हाउस है, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है. यदि आप वहाँ पे जाएंगे और राइपनिंग इंड्यूस हो गया तो राइपनिंग को रोकना है, तो इथाइलिन प्रोडक्शन को, वहाँ से इथाइलिन को रिमूव करते हैं. फ्रूट्स को राइपनिंग इंड्यूस करना है तो इथाइलिन से एक्सपोज करेंगे. उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है या राइपनिंग रोकना है तो इथाइलिन को उस एनवायरनमेंट से रिमूव करना है. सो वी टॉक अबाउट ऑल दिस ऑक्सीन्स इन अ वेरी क्विक वे. क्वेश्चन कहाँ से पूछेंगे? ऑक्सीन इंक्रीज द प्लास्टिसिटी ऑफ द सेल वॉल एंड इज इन्वॉल्वड इन द स्टेम इलोंगेशन, एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस. ओके, एजेंट ऑरेंज आपको याद रखना है. व्हाट इज एजेंट ऑरेंज? आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछते नहीं है. 1:1 ratio of 2,4-D and 2,4,5-D. 2,4-D and 2,4,5-D both are the synthetic auxins. Okay? Synthetic auxins है. Auxins जो है वो डोज डिपेंडेंट रेस्पॉन्स देता है, ये याद रखना. ऑक्सिन ऑलवेज द रेस्पॉन्स ऑफ ऑक्सिन इज डोज डिपेंडेंट. डोज डिपेंडेंट का क्या मतलब है? उसकी कंसंट्रेशन कम है तो अलग रेस्पॉन्स आ रहा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो अलग रेस्पॉन्स आ रहा है. दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द हार्मोन एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स. आपने देखा होगा हम ह्यूमंस में तो हम हार्मोन्स की बात करते हैं, ठीक है. कई जने कहते हैं हार्मोन और ग्रोथ, कई बार हम प्लांट हार्मोन भी नाम यूज करते हैं. प्लांट हार्मोन, ऑक्सीजन इज अ प्लांट हार्मोन. इट्स अ jargon टर्म वी आर यूजिंग. ये गलत नहीं है लेकिन ये टेक्निकली सही नहीं. These are growth regulators. One of the important difference between the growth regulators and hormone is what? आपकी बॉडी में हार्मोन का एग्जांपल लें, इंसुलिन. सो इंसुलिन इज नॉट ए डोज डिपेंडेंट. मीन्स यदि इंसुलिन का कम क्वांटिटी है तो वो अलग रेस्पॉन्स दे रहा है, इंसुलिन की ज़्यादा क्वांटिटी है तो अलग रेस्पॉन्स दे रहा है. इंसुलिन इन एवरी cases is responsible for absorption of glucose through GLUT transporter in the muscles or in liver. Okay, तो यदि लिवर में है तो GLUT7 ट्रांसपोर्टर से वो ले रहा है, मसल्स में तो GLUT4 से ले रहा है, हार्ट में तो GLUT4 से ले रहा है. लेकिन हर केस में एक ही फंक्शन है, that is absorption of the glucose from the blood into the cell, whether it is the muscle cell, heart cell or liver cell or any other cell. Okay.
but here the auxins always shows the dose dependent response in the low concentration. They are responsible for elongation of the cell, okay, plus they stop the leaf, okay? they do not promote the senescence, okay. But in higher concentration, the same auxin induce the ethylene production, and hence ultimately ethylene is responsible for leaf fall. Hence ethylene is responsible for leaf fall. So in higher concentration, more ethylene will be produced and the leaf fall will take place. तो जो वियतनाम वॉर हुआ था उसमें हेलीकॉप्टर से बहुत सारा एजेंट ऑरेंज स्प्रे किया गया, जिससे कि वो सारे जंगल के सारे पेड़ थे वो डिफॉलिएट हो गए ताकि टारगेट किया जा सके एनिमीज को. सो दिस यू नीड टू मेमोराइज. FW went, पता ही है आपको. Next, come to the gibberellins. Gibberellins are named after the fungus Gibberella fusiforoi. Okay, it is synthesized. It's a growth promoter synthesized in the apical portion of the stem. याद रखना, yes, auxins हमेशा unidirectional move करते हैं from upward to downward. Okay, in a single direction. बाकी दूसरे सारे जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है वो बाई डायरेक्शनल मूव कर सकते हैं, okay? But auxins can move only from upward to downward. Okay, it is synthesized in the apical portion of the stem and roots, and it is important. Its important effect is on the stem elongation. In some cases, it speed up. Hasten means speed up the seed germination. तो यदि आपको सीड को जल्दी से जर्मिनेट कराना है तो आप उसको जिब्रेलिक एसिड G3 से ट्रीटमेंट दे दें तो वो क्विकली जर्मिनेट होगा. यदि आपको सीड को लंबे समय तक जर्मिनेट नहीं कराना है तो याद रखिए एब्सिसिक एसिड का ट्रीटमेंट देना, ये याद रखना. बनाना और फुलिश सीडलिंग डिजीज जिब्रेला फ्यूजिफोराई से उसको डिस्कवरी किया था, उसकी स्टोरी आपको पूरा पता ही होगी. सो वी नीड नॉट टू गो इन द डिटेल. Responsible for elongation of the cell. Okay, J stimulate the elongation, breaking of the dormancy in the bud and seeds. Okay, gibberellin. Seed germination, especially in the cereal grasses like barley. मैंने बता ही दिया seed germination के लिए. Okay, promotion of the flowering. Flowering को promote कौन करता है? Gibberellins. Abscisic acid, opposite, it always inhibit. Okay. Particularly इसका transport is non-polar. Auxin का polar है, upward to downward. इसका नॉन पोलर है, बाई डायरेक्शनल है. ऑक्सिन का यूनिडायरेक्शनल है. नाउ दिस इज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन द CSIR December 2017. The plant hormone gibberellic acid is generally not associated with. इसमें नॉट पे आप ध्यान रखना. स्टेम इलोंगेशन हमने पढ़ा, अभी करता ही है. यस, स्टेम इलोंगेशन. पार्थेनोकार्पी, ठीक है, इसको भी थोड़ा होल्ड करते हैं. पार्थेनोजेनेसिस, इसको होल्ड करते हैं. माल्ट प्रोडक्शन. देखिए माल्टिंग क्या है. माल्टिंग मीन्स जो ब्रूइंग और अल्कोहल बियर इंडस्ट्रीज होती है उसमें माल्टिंग करते हैं. माल्टिंग में क्या करते हैं, जौ जैसे बियर प्रोडक्शन है तो उसमें जौ के सीड्स ले लिए, ओके, उसको J3 से ट्रीटमेंट कर देते हैं जिब्रेलिक एसिड से. इमीडिएटली द सीड्स विल गेट जर्मिनेट. जैसे ही सीड जर्मिनेट हो गए उसको एक्सट्रीम हीट कंडीशन देते हैं ताकि जर्मिनेशन के बाद उसका फर्दर ग्रोथ रुक जाए. देन उसमें क्रश करके उसमें यीस्ट ऐड करते हैं और फर्मेंटेशन से बियर प्रोडक्शन करते हैं. सो माल्टिंग या माल्ट प्रोडक्शन में जिब्रेलिक एसिड यूज होता है, राइट. सो 1 and 4 that is very much clear. Now come to the parthenocarpy and parthenogenesis. Parthenocarpy means seedless fruit का प्रोडक्शन. तो आपने थॉमसन फ्रूट्स का नाम सुना होगा. थॉमसन फ्रूट्स या कई बार आप जो क्या ग्रेप अंगूर के जो हाई अच्छी क्वालिटी के लेंगे तो आपको थॉमसन ग्रेप्स का नाम सुना होगा. बड़ी साइज के ग्रेप्स आते हैं
जो कि सीडलेस होते हैं, बड़ी साइज के होते हैं और टेस्ट में भी अच्छे होते हैं और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस उनकी ज़्यादा है। तो थॉमसन्स ग्रेप्स आर जनरली प्रोड्यूस थ्रू एक्सपोजर ऑफ द जिब्रेलिक एसिड GA3। तो पार्थेनोकार्पी मीन्स सीडलेस प्रोडक्शन में ये यूज होते हैं। इसी तरीके से आप कोई फ्लावर ले लें और फ्लावर पे जिब्रेलिक एसिड स्प्रे कर दें तो उसकी जो ओवरी है वो फूलने लगेगी और वो सीड बनाने लगेगी, लेकिन उस फ्लावर में पॉलिनेशन हुआ नहीं है, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है, तो सीड तो नहीं बनेगा लेकिन फ्रूट बन जाएगा। ओके, तो सीडलेस फ्रूट्स बनना पार्थेनोकार्पी कहलाता है और इसके लिए जिब्रेलिक एसिड रेस्पॉन्सिबल है। नाउ कम टू द फिर पार्थेनोजेनेसिस क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस इज वेरी मच सिमिलर टू पार्थेनोकार्पी, but in parthenogenesis is the phenomenon which is generally takes place in the organisms, like आपने सुना होगा आर्थ्रोपॉड्स, जैसे चींटियां हैं, हनी बी है। तो ऐसे इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपॉड्स में कई बार जो फीमेल एग ले करती है उस एग में विदाउट फर्टिलाइजेशन एग में एनिमल डेवलप होता है, उसको कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, मींस विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आपने देखा होगा सारे जो ड्रोन्स हैं हनी बी में वो सारे हैप्लॉइड्स हैं, आंट चींटियों में जो मेल हैं वो सारे हैप्लॉइड्स हैं। ओके, तो वो पार्थेनोजेनेसिस से डेवलप हो रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एनिमल ऑर्गेनिज्म, दैट इज पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोकार्पी इज फॉर पर्टिकुलरली फॉर प्लांट। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स का फंक्शन आपको पता ही है, प्रमोट सेल डिवीजन, रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉर्फोजेनेसिस मींस ऑर्गेनोजेनेसिस, ओके, लीफ बनना, ओके, और दूसरे प्लांट के स्ट्रक्चर बनना, इसको कहेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन्स बनना या मॉर्फोजेनेसिस कहेंगे। तो उसके लिए इज रेस्पॉन्सिबल, साइटोकाइनिन इज रेस्पॉन्सिबल। सिमिलरली लेटरल बर्थ डेवलपमेंट, डिले ऑफ सेनेसेंस है ना, जीर्णता को, बुढ़ापे को दूर करता है प्लांट में। नाउ कम टू द एब्सिसिक एसिड, इट इज प्रोड्यूस्ड मेनली इन द मैच्योर ग्रीन लीव्स इन fruits, okay, suppress the bud growth and promote the leaf senescence, play important role in controlling the stomatal opening and closing। ये याद रखना, stomatal opening and closing के लिए कौन सा important plant growth regulator है, that is abscisic acid। तो particularly जब stress conditions होती है तो आपने temporary wilting देखी होगी, यदि आपके गमले में कोई प्लांट है ना, रोज या कोई ऐसा गुलाब का प्लांट आपने लगा रखा है आपके गार्डन में, उसको आप मई जून में सनलाइट में रख दीजिए दोपहर, तो 2 दिन तक उसको पानी नहीं दीजिए, तो टेम्परेरी विल्टिंग हो जाता है, प्लांट की लीव्स एकदम से मुरझा जाएंगी। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि प्लांट में सॉइल में वाटर है नहीं, एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस हैं, तो हॉट कंडीशन को कम करने के लिए ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन में क्या है, जो हमारे स्टोमेटा है वो ओपन होते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन हो, ट्रांसपिरेशन से टेम्परेचर कंट्रोल में रहे। लेकिन यदि स्ट्रेस कंडीशन है, वाटर नहीं है, तो एब्सिसिक एसिड उस समय टेम्परेरली उन स्टोमेटा को क्लोज कर देता है ताकि वाटर लॉस नहीं हो। वाटर लॉस हो जाएगा तो प्लांट मर जाएगा। तो जो डेथ है, प्लांट की डेथ होने वाली है, उसको डिले करने के लिए एब्सिसिक एसिड टेम्परेरली स्टोमेटा को क्लोज कर देता है ताकि ट्रांसपिरेशन रुक जाए। ओके, सो फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा एब्सिसिक एसिड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन ये कंडीशन टेम्परेरी होती है, यदि आप फिर 2-3 दिन तक, 1 सप्ताह तक पानी नहीं दोगे तो फाइनली वो प्लांट मरना ही है। लेकिन बाय चांस तब तक यदि आप उसको पानी दे दोगे तो फिर वापस से सॉइल में वो पानी आ जाएगा, तो प्लांट विल सर्वाइव। Okay, so for opening and closing of the stomata, abscisic acid play important role। इनहिबिटर है, स्टोमेटा क्लोजर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, प्रोड्यूस इन द रेस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस कंडीशन है, बाहर धूप है, पानी नहीं है, तो स्ट्रेस है, स्ट्रेस में एब्सिसिक एसिड रेस्पॉन्स करेगा। एब्सिसिक एसिड प्रोड्यूस सीड डोरमेंसी, जैसे मैंने बताया ना, यदि आपको सीड को जल्दी जर्मिनेट कराना है तो जिब्रेलिक एसिड GA3 से ट्रीट कर लीजिए,
यदि आपको डॉर्मेंसी इंड्यूस करनी है सीड में, मींस सीड को लंबे समय तक स्टोर करना है, जर्मिनेट नहीं हो, ऐसा आप चाह रहे हो तो एब्सिसिक एसिड, तो डॉर्मेंसी याद रखना। नेक्स्ट इज इथाइलिन, इट्स ए गैसियस हार्मोन, ओके, produced by one plant, can affect the nearby plant, responsible for ripening in the fruit ripening, मैंने example बता दिया। Apinestrine, downward curvature of the leaves, encourage the senescence and abscission, initiation of the stem elongation and bud development. Flowering, ethylene generally inhibit the flowering, लेकिन exception है in pineapple and the members of bromeliaceae family, and in mango ethylene ethylene is responsible for the flowering. Okay? Exceptions हमेशा याद रखने पूछे जाते हैं। 1 amino cyclopropane 1 carboxylic acid is important intermediate of this hormone. इथाइलिन गैस है लेकिन इसका इंटरमीडिएट हमेशा याद रखना है 1 amino cyclopropane 1 carboxylic acid. इसी तरीके से ऑक्सिन का याद रखना है, ऑक्सिन का प्रीकर्सर ट्रिप्टोफान। ओके, सो ये क्वेश्चन पूछा गया था जून 2017 में। फॉर विच वन ऑफ द प्लांट हार्मोन बायोसिंथेटिक पाथवेज 1 amino cyclopropane 1 कार्बोक्सिलिक। अच्छा, अभी हमने बात की इथाइलिन के लिए इंटरमीडिएट कौन सा है, सो दिस इज 1 amino cyclopropane 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड और IA इज प्रेजेंट इन मोस्ट प्लांट, द स्ट्रक्चर ऑफ दिस हार्मोन इज रिलेटेड टू व्हाट, मैंने बताया था आपको ट्रिप्टोफान, no amino acid that is the precursor for this hormone. Okay, this is important question. Arabidopsis thaliana, देखिए आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा आपको पता होता है फिर भी आप आंसर नहीं कर पाते। ओके, तो K3 लेवल के आपने है ना रुब्रिक्स, सॉरी रुब्रिक्स नहीं, उसको आपने स्टडी किया होगा, K1 लेवल, K2 लेवल, K3 लेवल, है ना। तो K3 लेवल के और K2 लेवल के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। K1 लेवल मीन सिंपल फैक्ट पूछा, वो नहीं होना है ना। फिर सेल इलोंगेशन के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल है। अब आपके जो नॉलेज है उसको चेक करने का दूसरा तरीका है, लाइक अराबिडोप्सिस थैलियाना, ये एक मॉडल प्लांट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट है। The seeds were planted on Murasic and scoop medium MS medium plates with or without hormone। तो 2 प्लेट ले ली है, एक में हार्मोन ऐड किया है, दूसरे में नहीं किया। इसमें कौन सा हार्मोन किया है आपको नहीं बताया गया। Seeds were found to germinate late in the hormone containing MS plate। मतलब ये कह रहा है जिस प्लेट में आपने हार्मोन ऐड किया था उस प्लेट में सीड जर्मिनेशन डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, जबकि दूसरा प्लेट जिसमें आपने सिर्फ MS मीडियम ऐड किया है उसमें कोई ग्रोथ रेगुलेटर ऐड नहीं किया है, उसमें सीड जर्मिनेशन फास्ट हो रहा है। तो आप क्वेश्चन पूछा है आइडेंटिफाई द हार्मोन इन MS प्लेट, ठीक है, तो बताइए आप, यू कैन राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स। सीधा सीधा पूछ लेता कि कौन सा हार्मोन है जो सीड जर्मिनेशन को डिले कर रहा है, तो आप तुरंत बता देते हैं। अब उसी क्वेश्चन को उसने थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया है। So abscisic acid, जैसा मैंने बताया, abscisic acid is responsible for delaying in the यहाँ पे चैट बॉक्स कहाँ से देख सकते हैं हम, ये देख सकते हैं। Sir, it is down on your screen itself. You can see there is a chat like option which I is have to there. stop the sharing from there. No, I think so. Without that चलेगा, also चलेगा। you can see. They have answered the answer as 4. Most of them. Now come to the important role of these growth regulators in plant tissue culture. So cytokinins stimulate the shoot multiplication. Okay, टिश्यू कल्चर में क्या रोल है इसकी बात हो रही है, शूट मल्टीप्लिकेशन, डी नोवो शूट बट डिफरेंशिएशन, नए शूट बट्स बनाना इन सेल डिवीजन। ओके, auxins play important role in the induction of callus, okay, in induction of root in vitro root induction, generally we use IBA or 2,4-D। IBA बहुत important है जो कि pulse treatment से दिया जाता है for induction of the root।
एंड इंडक्शन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में हमेशा ध्यान रखना सोमेटिक एम्ब्रियो कब बनते हैं? स्ट्रेस कंडीशन में, है ना। तो जब भी प्लांट को स्ट्रेस दिया जाएगा वो एम्ब्रियो बनाएगा। तो आपको यदि इन विट्रो एम्ब्रियोजेनेसिस इंड्यूस करना है, सो गिव सम स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या हो सकता है? न्यूट्रिशनल स्ट्रेस, न्यूट्रिशन में कुछ कमी कर दीजिए, है ना, वो एम्ब्रियो बनाने लगा। या फिर आप ऑक्सीन्स का ट्रीटमेंट दीजिए। तो जनरली हम क्या करते हैं, वी पुट दी प्लांट एक्सप्लांट ऑन ए high oxygen containing medium, and in the next subculture cycle we transfer it on a medium which is having low nutrient and without oxygen. So immediately the somatic embryo will develop. Okay. So this is important. Now come to the question, which of the following is not a root inducing hormone? तो मैंने बताया ऑक्सीन्स आर रूट इंड्यूसिंग हार्मोन। इसमें से ऑक्सीन्स जो नहीं होगा वो रूट इंड्यूसिंग नहीं होगा। सो NAA नैप्थेलिक एसिटिक एसिड इज एन ऑक्सीन, पता है। IA इंडोल एसिटिक एसिड इज एन ऑक्सीन। IBA तो बहुत ही ज़्यादा रूट इंड्यूस करता है, इसलिए इसको रूट इंड्यूसिंग हार्मोन कहते हैं, वो भी ऑक्सीन है। BAP बेंजाइल 6 बेंजाइल एमिनोप्यूरिन इज ए साइटोकाइनिन, इट्स नॉट ए ऑक्सीन। इसका आंसर हो जाएगा BAP। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइटोकाइनिन? सो 2,4,5-D और 2,4,5-T these are the ऑक्सीन्स। तो हमने देखा था अभी एजेंट ऑरेंज इज ए मिक्सचर ऑफ 2,4-D and 2,4,5-T, तो से ऑक्सीन नॉट ए साइटोकाइनिन। लाइक BAP, काइनेटिन and 2IP are the example of cytokinin. Shoot elongation during micropropagation can be achieved by, आपको शूट इलोंगेशन करना है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। शूट इलोंगेशन करना है मीन्स इसका हाइट बढ़ाना है, लेंथ बढ़ाना है टिश्यू कल्चर में। तो कैसे हो सकता है? इंक्रीजिंग ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द मीडियम। सोचिए इसमें, इसको ऑल्टर रखते हैं। सेकेंड ऑप्शन, रिड्यूसिंग द साइटोकाइनिन कंसंट्रेशन। थर्ड, एडिंग जिब्रेलिन्स इन द मीडियम। तो सी तो सही है, जिब्रेलिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन, तो इसमें तो हमें कोई डाउट है नहीं। अब ये कह रहा है B and C, तो सी सही है। तो ए के बारे में देखते हैं। इंक्रीजिंग ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, तो हमने देखा इन विट्रो कंडीशंस में इन टिश्यू कल्चर द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट? इन टिश्यू कल्चर ऑक्सीजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैलस इंडक्शन, हमने अभी देखा था। या फिर इन विट्रो रूटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, या सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन ऑफ द शूट। तो ए तो गलत है, ओके। सी सही है। बी की बात करते हैं, रिड्यूसिंग द साइटोकाइनिन कंसंट्रेशन इन द मीडियम। साइटोकाइनिन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल था? साइटोकाइनिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फूड। तो यदि एक काम हम कर दें, एक काम यदि हम कम कर दें, यदि कोई मजदूर है 2 काम कर रहा है ना, उसको एक काम कम कर दें और उसको कंटिन्यूस करने के लिए बोले, वो दूसरा काम अपने आप बढ़ जाएगा, दूसरा काम ज़्यादा करेगा। तो यदि हम साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर देते हैं तो नेचुरली जो प्लांट सेल्स है वो इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि साइटोकाइनिन का काम क्या है? पहले उसकी एनर्जी 2 काम में डिवाइड थी। एक तो इलोंगेट होना था और उसको मल्टीप्लाई भी होना था, क्योंकि साइटोकाइनिन क्या कर रहा था? मल्टीप्लिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल। लेकिन साइटोकाइनिन आपने कम कर दिया तो सारे प्लांट जो शूट्स हैं वो इलोंगेट होना स्टार्ट कर देती है। जैसे एक मजदूर है, वो दीवार भी बना रहा है, ठीक है, और साथ साथ में दूसरा काम भी कर रहा है। अब उसको कहेंगे तुम ये पानी भरना बंद करो और सिर्फ दीवार बनाना काम चालू रखिए, तो वो पानी भरना बंद करेगा तो दीवार ज़्यादा बनेगी ऑब्वियसली। सो साइटोकाइनिन इंड्यूस्ड मल्टीप्लिकेशन व्हेन रिड्यूस, then obviously the elongation will start. So इसका ऑप्शन होगा B and C both. Okay. So growth hormone which is producing apical dominance, तो हमें पता है ऑक्सीजन is responsible for apical dominance. Which plant growth regulator inhibits senescence? Cytokinin पता ही है। Which plant growth hormone is responsible opening and closing of stomata? हमने बताया abscisic acid. Flowering in plant कौन induce करता है? Which hormone induce gibberellins? Okay. Now come to the different pathways of the micropropagation.
फर्स्ट जो पाथवे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि हम इसको डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। माइक्रो प्रोपगेशन थ्रू स्टिमुलेटेड एक्सिलरी बड प्रोलिफरेशन, या इसको एनहांस्ड एक्सिलरी ब्रांचिंग पाथवे भी कहते हैं। तो इसमें मैंने बताया था हम ऐसा एक्सप्लांट यूज करते हैं जिसमें प्री एग्जिस्टिंग बड्स, ओके, जैसे कि नोडल एक्सप्लांट, तो इट्स एन नोडल एक्सप्लांट, ओके। ये वही राइटिया टोमेंटासा प्लांट है, तो उसके नोडल पार्ट्स हमने लिए। okay? So nodal parts contain the pre-existing buds in the joint this nodal segment, okay? इस जहाँ से ब्रांचिंग हो रही है, ब्रांचिंग क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ पे बर्ड जो है, जैसे यहाँ पे 10 बर्ड थी तो उसमें से 2 बर्ड जो हैं यदि वो जर्मिनेट हो गए तो बाकी की 8 बर्ड्स जो हैं वो नेचुरल जो इन विवो कंडीशंस हैं उसमें ऑक्सीजन के इन्फ्लुएंस में हमेशा डॉर्मेंट रहती है। लेकिन यदि आप यहाँ पे कुछ साइटोकाइनिन्स ऐड करते हैं मीडियम में, then those dormant bud will germinate and then they will give rise to the new shoots, okay? So in stimulated axillary bud proliferation or in enhanced axillary bud proliferation, we use cytokinin like BAP, and now these pre-existing bud will give rise to the new shoots, ऐसे नए shoots develop, okay? तो ऐसा पाथवे कहलाएगा एनहांस्ड एक्सिलरी ब्रांचिंग पाथवे। मटेरियल मेथड इसमें क्या रिक्वायर्ड है ये हमें पता ही है। नाउ व्हाट हैपेंस इन द स्टेज 1, दिस इज द एस्टैब्लिशमेंट स्टेज। द एस्टैब्लिशमेंट स्टेज विद एसेप्टिकली, अब आपको पता ही है एसेप्टिकली क्या होता है। आफ्टर प्रॉपर स्टरलाइजेशन वी ट्रांसफर द एक्सप्लांट ऑन ए सुटेबल मीडियम, ओके। एस्टैब्लिशमेंट स्टेज मींस जो मदर प्लांट है वहां से एक्सप्लांट को कलेक्ट करना और उसको एसेप्टिकली सुटेबल मीडियम पे ट्रांसफर करना। अप टू दिस स्टेज इट इज टर्म्ड एज द एसेप्टिक कंडीशंस एंड establishment stage. So after establishment stage, the bud will germinate and give rise to the new shoot. So this is the establishment stage, stage 1. And now in the second stage we do multiplication. अब इसको हम फ्रेश मीडियम पे, अब क्या है ये कंप्लीट होता है 1 महीने में। आपने एक्सप्लांट ट्रांसफर किया सुटेबल मीडियम पे और आप within 1 month the development of new shoots takes place. Now our objective is to increase the number of shoots. So इसको हम finally नेक्स्ट सुटेबल मीडियम पे ट्रांसफर करते हैं जिसमें भी ऑक्सीजन रहेगा। सो मोर नंबर ऑफ द शूट्स विल डेवलप एंड यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस कॉनिकल ग्लास up to 15 to 20, a bunch of 15 to 20 shoots has arised, है ना। 15 से 20 shoots डेवलप हो चुके हैं, okay? तो इस स्टेज को कहेंगे मल्टीप्लिकेशन स्टेज। अभी हम पाथवे पढ़ रहे हैं, पाथवे में स्टेजेस हैं। स्टेज 1 इज व्हाट, मैं पहले एक बार सिंपल मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया था स्टेज का, स्टेज एस्टैब्लिशमेंट, मल्टीप्लिकेशन, रूटिंग और हार्डनिंग। दिस इज स्टेज 2, ओके। सो स्टेज 2 इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर ऑफ शूट्स। तो इनिशियली एक एक्सप्लांट से एक शूट निकला, उसको फ्रेश मीडियम पे सब कल्चर किया तो उसके बेस से कई सारे दूसरे शूट्स निकले और नंबर ऑफ शूट reaches to 15 to 20. This is termed as multiplication. नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन आप फिर कर सकते हैं, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करिए, तो 15 शूट हैं तो एक पार्ट में सपोज 5 आए, उसको फ्रेश मीडियम पे फिर से ट्रांसफर करिए, तो अगेन फ्रॉम बेस द न्यू शूट्स विल डेवलप। सो थ्रू दिस वे यू विल फाइनली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ शूट्स। सो एट द एंड, starting from one explant, at the end of 1 year you will have up to 50,000 shoots. Okay, so that is termed as multiplication. लेकिन अभी भी इसको लिए मैं टर्म जो यूज कर रहा हूँ दैट इज शूट, दिस इज नॉट प्लांट। शूट मीन्स जिसमें कि कंप्लीट प्लांट नहीं है। ये क्या है, इसमें कुछ लीव्स हैं, एक स्टेम है, प्राइमरी स्टेम है और लीव्स हैं, फ्लावर नहीं है, रूट नहीं है, तो ये शूट ही कहलाएगा। अब ये जैसे इस एक फ्लास्क में 15 to 20 शूट्स हैं, यदि ऐसे शूट्स को मैं बाहर जा करके फील्ड में सॉइल में ट्रांसफर कर दूं तो वो सरवाइव करेंगे गमले में? नो, बिकॉज इसमें रूट नहीं है। तो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है, ऐसे 15 शूट्स को
convert करना into plantlets. So we have to induce the rooting, in vitro rooting, lab में rooting induce करना, vitreous conditions में, in glasswares में. Okay. So the third stage is in vitro rooting. So ये 15 shoots का एक bunch था, उसको मैंने 15 shoots को separate कर लिया, हर shoot को separately एक sugar tube में transfer किया. Now in this medium I have added auxins, क्योंकि हमने पढ़ा था auxin is responsible for in vitro rooting. So under the particularly मैंने क्या बताया था, IBA. तो इसमें IBA जब मैं ऐड करता हूँ तो अब मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, अब क्या होगा, now this single shoot will develop the root. Okay? And after 25 to 30 days one shoot will convert into एक shoot, one shoot is convert into plantlet. Plantlet means which is containing the root, the stem, the leaves, all the three important part of the plant. But it is a still plantlet, not the plant. Plantlet means a mini plant, a miniature plant, which still do not have the ability to survive in the open environmental conditions. Okay, तो जैसे एक बच्चा है वो एक complete adult का miniature form है, but it cannot survive. Okay, it still till it do not get there, till it do not achieve a certain age, it cannot survive independently. So likewise this plantlet do not survive independently. Okay, तो हमें इसको क्या करना है, हमें इसको hardening करना है, उसको we have to make it competent enough so that they can withstand all the outer harsh conditions which are present in the open environment condition. क्योंकि टिश्यू कल्चर में हम उसको आर्टिफिशियल कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस में रख रहे हैं, उसको हम खाना दे रहे हैं, उसको टेम्परेचर का ध्यान रख रहे हैं, उसमें ह्यूमिडिटी का ध्यान रख रहे हैं, है ना, तो कंटामिनेशन नहीं हो इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं. So finally, before the transplantation in the soil, we have to harden it. Okay? तो हम खाना दे रहे हैं, तब हम कहेंगे अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारे पास लीव्स है, you can produce your food by yourself. So we will withdraw the sugars and the nutrients. We will transfer it in a medium which is soil right. Okay? So अब हम कहेंगे अब हम तुम्हें सिर्फ पानी देंगे, अब तुम्हारे पास लीव्स हैं, तुम्हारा खाना खुद बनाओ, तुम autotrophic हो, you can synthesize, you can fix the carbon, and you can synthesize the starch. Okay, so through that way. Okay, फिर हम कहेंगे तुम बहुत दिन तक एसी में रहे, अब हम आपको ग्रीन हाउस में ले जाते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर पार्शियली कंट्रोल रहेगा, पूरा कंट्रोल नहीं रहेगा, फिर हम उसको 30 डिग्री पे ले जाएंगे, फिर 32 डिग्री पे 7 दिन तक 30. So slowly we make these plants hard. Okay, so we make them competent. So that stage is termed as hardening and acclimatization, because we are acclimatizing the plant towards the outer harsh conditions. That is the hardening and acclimatization stage. That is also very important step, okay, of the tissue culture. Now, what is the outcome of this? हम ऐसा कब करेंगे? Okay, so large number of genetically uniform plants. यदि our objective is to maintain the genetic truthfulness or genetic fidelity in the plants, then we follow this pathway. Genetic fidelity या genetic truthfulness means जैसे आपके गार्डन में कोई मैंगो का प्लांट है, आपका गुजरात का कौन सा केसर मैंगो is very famous, and that plant which is the mango kesar plant which is growing in your garden is having a very elite taste, okay, superb taste. The fruit size is very much good. Okay, the number of fruits on a single plant is very much satisfactory. Okay, so if you want that ऐसा का ऐसा plant दूसरा बने, okay, तो एक तो है उस plant के फ्रूट लिए, उसमें से सीड आपने सेपरेट किया और सीड को आपने वापस से जर्मिनेट कर दिया, ठीक है, नया प्लांट बन गया. लेकिन दैट सीड वाज डेवलप्ड थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, एंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन meiosis has taken place, hence the genetic recombination has taken place, hence the variability will be there.
तो ये जहाँ पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एनिमल्स में, जैसे सचिन तेंदुलकर का बेटा एग्जैक्ट सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकता, ओके, बिकॉज रिकॉम्बिनेशन हैज टेकन प्लेस। एक ही पेरेंट्स के चारों लड़के सेम नहीं है बिकॉज ड्यू टू वेरिएशंस, ओके। तो वो ही एलीट प्लांट का जर्म प्लाज्म उसके सीड से जब आप डेवलप करेंगे तो इस चीज की गारंटी नहीं है। हाँ, वो प्लांट मैंगो का ही रहेगा, केसर का ही रहेगा, फ्रूट भी वही साइज शेप के रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज कॉम्प्रोमाइज होगी, टेस्ट वो नहीं रहेगा, है ना, या फिर कुछ स्लाइट चेंजेस विल बी देयर। सो इट डू नॉट गारंटी द जेनेटिक फिडेलिटी, ट्रुथफुलनेस। लेकिन यदि आप एनहांस्ड एक्सिलरी ब्रांचिंग पाथवे फॉलो कर रहे हैं, मीन्स उस प्लांट का नोडल सेगमेंट लिया, उससे आपने प्लांट डेवलप की, तो दैट विल गारंटी द जेनेटिक ट्रुथफुलनेस। क्यों? क्योंकि आपने सोमेटिक सेल्स लिए, 2n सेल्स लिए हैं, तो आपने एक्सप्लांट लिया, क्या लिया? नोडल सेगमेंट। नोडल सेगमेंट क्या है? 2n सोमेटिक सेल्स। उससे जो प्लांट रहेंगे वो एग्जैक्टली सेम रहेंगे। एग्जैक्टली सेम होने के कारण उसमें फ्रूट साइज, फ्रूट नंबर, टेस्ट, एवरीथिंग विल बी 100% सिमिलर विद द मदर प्लांट। हेंस हम कह सकते हैं हम जेनेटिक ट्रुथफुलनेस मेंटेन करनी हो तो कौन सा पाथवे फॉलो करेंगे? एनहांस्ड एक्सिलरी ब्रांचिंग। नेक्स्ट इज adventitious shoot bud differentiation. Okay, so adventitious shoot bud differentiation में we always chooses an explant which is not containing a pre-existing meristem. Pre-existing bud जैसे मैंने बताया internal, है ना? This is again the same example, है ना, Annona squamosa, custard apple या जिसको सीताफल कहते हैं. Okay, so in this the nodal segments do not have any pre-existing buds, but under the influence of certain plant growth regulators, the new shoots will develop. Similarly, आप leaf explant ले सकते हैं और उससे leaf से नए shoots develop होंगे, तो उसको adventitious shoot bud differentiation करेंगे. Material methods आपको समझने की जरूरत नहीं, आपको ये याद रखना, एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में क्या करेंगे? एक्सप्लांट लेंगे. एक्सप्लांट कौन सा लेंगे? जहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग मेरिस्टेम बर्ड नहीं है. यदि प्री एग्जिस्टिंग मेरिस्टेम बर्ड है वो ले लिया तो उसको क्या कहेंगे? एनहांस्ड एक्सिलरी ब्रांचिंग या स्टिमुलेटेड एक्सिलरी बर्ड प्रोलिफरेशन. ओके, नाउ अगेन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज, मल्टीप्लिकेशन स्टेज, रूटिंग स्टेज एंड हार्डनिंग एंड एक्लेमेटाइजेशन स्टेज, ऑल द स्टेजेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ आउटकम. अब ये कब करेंगे? अब आप पूछ सकते हैं सर जब हम उससे कर सकते हैं, नोडल सेगमेंट से कर सकते हैं, एनहांस्ड एक्सिलरी से कर सकते हैं, तो ये एडवांटेजेस यूज करने की जरूरत क्या है ना? यू आर राइट. लेकिन इस पाथवे का एप्लीकेशन तब है जब आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है ना? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी नोडल सेगमेंट में नहीं हो सकता है. जैसे आप पार्टिकल गन बम्बार्टमेंट करना चाहते हैं तो पार्टिकल गन बम्बार्टमेंट कहाँ करेंगे? जो सॉफ्ट टिश्यू है. सॉफ्ट टिश्यू प्लांट का क्या है? सॉफ्ट टिश्यू हो सकता है प्लांट का लीफ हो सकता है, यस, है ना, इंटरनल हो सकता है, नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. दूसरा होता है एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल. जब भी सीड जर्मिनेट होता है, आपने देखा होगा, एक तो होता है एपिकोटाइल, मीन जहाँ से शूट बनता है, शूट प्राइमोर्डिया, दैट विल गिव राइज टू एपिकोटाइल. हाइपोकोटाइल मीन्स जो रूट बनाएगा उसको हम कहते हैं हाइपोकोटाइल. दैट इज द मोस्ट सॉफ्ट टिश्यू वेयर यू कैन डू द पार्टिकल गन बम्बार्टमेंट. पार्टिकल गन बम्बार्टमेंट करना है तो लीफ लेंगे या फिर पेटल लेंगे, फ्लावर सेपल लेंगे या फिर एपिकोटाइल लेंगे या hypocotyl. Okay, so in this particular figure you can see this is the hypocotyl region of perennial pneumonia. Okay, this experiment was done in Professor A.K. Tyagi's lab in Delhi University. One of my colleagues did it on the particle gun bombardment using the hypocotyl region of the perennial pneumonia. So इसमें आप देख सकते हैं गस से किया है बाद में. जो भी आपको ब्लू स्पॉट्स दिख रहे हैं वो ब्लू स्पॉट्स जो है वो बेसिकली ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं. सो अब इन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को हम
पिक करेंगे, सेपरेटली कल्चर करेंगे और उससे न्यू प्लांट्स बनाएंगे तो वो ट्रांसजेनिक प्लांट होगा। तो इससे क्या क्या क्लियर होती है चीज, whenever your objective is to carry out transgenic, then only advantageous shoot but differentiation pathway will be followed. Okay? तो ये पाथवे हम कब फॉलो करेंगे, जब हमारा ऑब्जेक्टिव ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप करना है। एनहांस्ड एक्सिलरी या स्टिमुलेटरी एक्सिलरी बर्ड प्रोलिफरेशन कब करेंगे, जब हमारा ऑब्जेक्टिव जेनेटिक फिडेलिटी, जेनेटिक ट्रुथफुलनेस मेंटेन करनी है। तो अभी मैं समझता हूँ आपको क्लियर बता रहा है। नेक्स्ट इज सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस दो तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, उसमें पहले एक्सप्लांट लेते हैं, एक्सप्लांट से या तो एक्सप्लांट से डायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोज डेवलप हो सकते हैं, या फिर उससे पहले कैलस डेवलप होगा। इस फिगर में आप देखिए पहले कैलस डेवलप हुआ है। ओके, दिस इज कैलस। कैलस इज व्हाट, undifferentiated mass of cells, and when on this undifferentiated mass of cells new shoot new embryo develop, then it is termed as somatic embryogenesis. सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, थिलिडा पर्टुगालिस हमने किया है। तो अब आप कह सकते हैं सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कब करेंगे, ठीक है। सो व्हेन योर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस सिंथेटिक सीड्स, आपको ऐसे स्ट्रक्चर सीड्स बनाने हैं जो आप लेबोरेटरी में यहाँ बना लें और बाद में उसको अहमदाबाद या बड़ौदा में ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट बना करके मैं ले जाऊँ, है ना, तो एक प्लांट का साइज ही 2 फीट होगा, उसके फिर जो गमला जो रहेगा पॉट, उसका साइज तो फिर एक, यदि आपको 100 प्लांट ले जाने हैं तो भी आपको कितना बड़ा एक व्हीकल चाहिएगा, है ना। लेकिन यदि आप करें, आपको ट्रांसपोर्टेशन से बचना है, तो आप एम्ब्रियो बना लें और एम्ब्रियो बना करके सोमेटिक एम्ब्रियो को कन्वर्ट कर दें सिंथेटिक सीड्स। तो एक बॉक्स में आपको हजारों सिंथेटिक सीड्स आ सकते हैं, क्योंकि एक सीड की साइज मैक्सिमम 1 सेंटीमीटर है ना। अब उन सीड्स को वहां जा करके आप ग्रो कर लें। सो दिस प्रोटोकॉल इज डेवलप्ड विद suitable synthetic seeds or for automation purpose. Okay? So when your objective is automation and production of synthetic seeds, then somatic embryogenesis pathway is the best suitable pathway. Next is callus organogenesis. Callus organogenesis means पहले प्लांट से कैलस बनाए, कैलस से सोमेटिक एम्ब्रियो ना बनाए, लेकिन कैलस से शूट्स बनाए। मींस कैलस में एम्ब्रियो नहीं बने, लेकिन कुछ सेल्स सिंक्रोनाइज होकर के साथ में डिवाइड करने लग जाएं और नया शूट्स का डेवलप करें, then it is termed as the callus organogenesis. Okay, so this is the example of callus organogenesis carried out in Peronia pneumonia, one of my favorite plant. Okay, so in this first we developed the callus, we took the explant, and this callus developed, and from this callus the new shoots arise. This is termed as callus organogenesis. Finally multiplication of the callus will be done, and then in vitro rooting will be carried out, and finally hardening and acclimatization will be done. Okay, outcome of this, अब आप कहेंगे कि callus organogenesis कब करना है, आपने 4 पाथवे बताए, हर एक का अपना अपना आउटकम बताया। callus organogenesis तब करना है जब आपको फिडेलिटी मेंटेन नहीं करनी। आप कहेंगे फिडेलिटी मेंटेन नहीं करनी, ऐसा क्यों करना है? कभी कभी तो आप कहते हैं कि फिडेलिटी मेंटेन होनी चाहिए, कभी कहते हैं फिडेलिटी मेंटेन नहीं करनी। तो याद रखिए callus organogenesis is the pathway where there is maximum chances of somaclonal variation. सबसे ज्यादा somaclonal variations आने के चांसेस कहाँ पर हैं? callus organogenesis में। दूसरा, stimulatory axillary bud proliferation is the pathway where is minimum chances of occurring somaclonal variation. सबसे कम somaclonal variation enhanced axillary branching में आएंगे। सबसे कम मतलब fertility सबसे ज्यादा ना, सबसे कम वेरिएशन आएंगे, इट मींस वो एग्जैक्टली पेरेंट्स के अकॉर्डिंग है, मदर प्लांट से जैसा ही है। सबसे ज्यादा वेरिएशन आएंगे मींस मदर प्लांट से वो उतना डिफरेंट है। जो जितना, दूसरा सोमाक्लोनल वेरिएशंस आर जनरली इंफीरियर, अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, इसलिए सोमाक्लोनल वेरिएशन को फेवर नहीं किया जाता।
लेकिन कई बार एस्थेटिकली कुछ सोमाटिक्लोनल वेरिएशंस को फेवर किया। एस्थेटिकली मतलब जैसे आप सोचें कि एक ऐसा लेमन का प्लांट है आपके गार्डन में जिसकी हाइट 3 फीट है और उस पे फ्रूट आ रहे हैं, तो dwarfness is an inferior character, राइट? लेकिन एस्थेटिकली आपको पसंद आ गया कि यार ऐसा प्लांट तो होना चाहिए मेरे गार्डन में जिसमें कि छोटी हाइट में 3 फीट में फ्रूट्स हैं, है ना? तो inferior characters sometimes aesthetically can be favored. Likewise यदि मैं एग्जांपल बताऊं, एक ब्लड रेड कलर का रोज का प्लांट है, इट्स गुड, ओके? सो हायर एंथोसाइनिन एक्यूमुलेशन इज ए डोमिनेंट और सुपीरियर करेक्टर। लेकिन यदि ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर उसमें ऐसा वेरिएशन, सोमाटोनल वेरिएशन आ जाए कि उसके पेटल्स में कहीं कहीं पे एंथोसाइनिन प्रोडक्शन स्टॉप हो जाए। अब क्या होगा, एंथोसाइनिन प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा तो बीच बीच में रेड रोज में बीच बीच में स्पॉटिंग हो जाएगी जहाँ पे रेड कलर एब्सेंट है। वाइट कलर हो सकता है या फिर कलर एब्सेंट हो सकता है, दूसरा कुछ कलर हो सकता है, तो वो स्पॉटेड रोज हो गया। तो ये है तो इंफीरियर, लेकिन हो सकता है आपको पसंद आ रहा है यार ऐसा रोज है जिसमें कि बीच बीच में स्पॉट्स हैं। तो sometimes the inferior characters can be of useful for aesthetic purpose and आप चाहते हैं कि ऐसा प्लांट बने, तो आप क्या करेंगे कि आप ऐसा करेंगे कि वेरिएशंस आए, ऐसा मैं कुछ करूँ। तो वेरिएशंस किस में ज्यादा आ रहे हैं? कैलस ऑर्गेनोजेनेसिस। अच्छा, आप पूछ सकते हैं कैलस ऑर्गेनोजेनेसिस में वेरिएशंस ज्यादा क्यों आ रहे हैं? बिकॉज कैलस ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या हो रहा है, पहले हमने एक डिफरेंशिएटेड सेल लिया, ठीक है, मेरिस्मेटिक सेल, उसको अनडिफरेंशिएटेड स्टेज में ले गए। कैलस क्या है? व्हाट इज कैलस की डेफिनेशन आपको पता होगा, इट इज एन अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। ओके, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स मींस ऐसी सेल्स है जो अनडिफरेंशिएटेड है। तो हमने पहले उसको रिवर्स कन्वर्ट कराया, है ना? आप यदि 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो तो हमने आपको वापस 8th स्टैंडर्ड में ले आए, फिर वापस से उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस इंड्यूस कराया, है ना? तो फिर वापस 8th में लेगा और 8th से वापस 10th में लेगा। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, okay, the cell undergo a you can say number of genes will get switch on and number of genes will get switch off, okay? So there is a chaos in the nucleus of the cell that sometimes, okay, you are provoking, okay, now आप undifferentiate हो जाओ, है ना? तो वो सेल अपने कई सारे जीन्स को स्विच ऑफ करेगा। देन आप उसको एक ऐसे मीडियम पे ट्रांसफर करते हो जहाँ पे ऐसा ग्रोथ रेगुलेटर है जो कि कह रहा है कि मॉर्फोजेनेसिस को स्टार्ट करिए, तो फिर आप वापस अनडिफरेंशिएटेड वाले सारे जीन्स स्विच ऑफ करेंगे, नया जीन्स स्विच ऑन करेंगे। ड्यूरिंग दिस chaos the maximum chances of mutation is there. Hence कहीं ऐसा म्यूटेशन हो गया जो ड्वार्फनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कहीं ऐसा म्यूटेशन हो गया जो कि एंथोसाइनिन प्रोडक्शन को स्टॉप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सो ड्यू टू ऑल दीज रीजंस मैक्सिमम वेरिएशंस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द कैलस ऑर्गेनोजेनेसिस पाथवे, हेंस दिस पाथवे गिव राइज टू वेरिएशंस। ठीक है, नाउ देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस कैन बी यूज्ड टू स्टरलाइज? UV rays, yes. X-ray नहीं यूज होता है, गामा रेज यूज होती है, yes. What is the pore size of HEPA filter? 0.3 micron. Incineration is flaming, आपको पता ही है। Which of the following is a surfactant? इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप एक बार देख लीजिए। मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2, it's a chemical sterilizer, okay? तो ये स्टरलाइजर है। सर्फेक्टेंट मीन जो सरफेस टेंशन को कम कर दे। इथेनॉल इज आल्सो स्टरलाइजर, सोडियम हाइपोक्लोराइड इज आल्सो स्टरलाइजर, बट ट्विन 20 इज ए सर्फेक्टेंट। इसी तरीके से SDS और CTEP, दिस इज आल्सो सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट तो सारे डिटर्जेंट हैं, ओके, जो सरफेस टेंशन को कम करते हैं, वो सारे सर्फेक्टेंट होंगे। ट्विन 20,
Subculturing is essential in tissue culture in order to compensate for the depleted nutrient, maintain active growth. The formation of calyces process. Callus क्या है? Redifferentiation, polarization. So callus क्या है? De-differentiation. मतलब एक हाईली डिफरेंशिएटेड स्टेट से रिवर्स आना, 10th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड में आना. It's a de-differentiation. Okay. Which of the following is not a method of single cell culture? So shape culture method is not a single cell culture. Shape culture में हम हमेशा कई सारी सेल्स लेते हैं. जनरली सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन में हम शेप कल्चर यूज करते हैं. नर्स टिश्यू कल्चर सिंगल सेल कल्चर के लिए, माइक्रो चैम्बर में छोटे से चैम्बर में सिंगल सेल को कल्चर करते हैं. माइक्रो ड्रॉप में एक ड्रॉप के अंदर एक सेल को रखा जाता है. सो दिस ऑल आर दी single cell culture methods. Which of the following feature can be observed in vitro raised plantlet? ये याद रखना. Which of the following feature may be observed in vitro raised plantlet? मिक्सो ऑटोट्रॉप. प्लांट का नॉर्मल नेचर क्या? प्लांट ऑटोट्रॉप है. एनिमल्स हम लोग क्या? हिट्रोट्रॉप. हिट्रोट्रॉप मीन जो हमारे न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट है, हम हिट्रोट्रॉप है. प्लांट ऑटोट्रॉप है मीन्स प्लांट अपना खाना खुद बना सकता है. ओके. सो जनरली प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप, लेकिन टिश्यू कल्चर में इन विट्रो कंडीशंस में हम प्लांट को मीडियम पे ग्रो कर रहे हैं, और मीडियम में हम सुक्रोज भी ऐड कर रहे हैं, कार्बन सोर्स भी ऐड कर रहे हैं. तो प्लांट अपना खाना बना सकता है, लेकिन हम इसको आर्टिफिशियली भी कर रहे हैं. वो प्लांट उसमें ग्रो होगा तो कुछ खाना तो वो खुद बनाएगा और कुछ खाना वो एब्जॉर्ब करेगा. तो इसको कहेंगे मिक्सो ऑटोट्रॉप. मिक्स टाइप का उसका फीडिंग हैबिट है. ओके. डिफॉर्म्ड स्टोमेटा होते ही. ओके. जनरली आप प्लांट को इन विवो कंडीशन फील्ड में ग्रो करेंगे तो उसके स्टोमेटा हैं वो नॉर्मल रहेंगे. लेकिन जब आप उसको, स्टोमेटा का काम क्या है? ट्रांसपीरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके, ओपनिंग एंड क्लोजिंग. लेकिन यदि आप उसको टेम्परेचर 25 डिग्री दे रखा है, लाइट प्रॉपर मिल रही है, न्यूट्रिएंट प्रॉपर मिल रहा है ना, तो उसको स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग करना ही नहीं है, ट्रांसपीरेशन करना ही नहीं है. तो उस फॉर्म में जैसा हमें बताते हैं ना, किसी काम को आप करेंगे नहीं धीरे धीरे तो आपका वो ऑर्गन एक्टिव नहीं रहेगा. आप यदि रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपका स्टेमिना कम हो जाता है ना. तो स्टोमेटा का काम इन विट्रो कंडीशंस में होता ही नहीं है, तो उसके स्टोमेटा इनएक्टिव हो जाते हैं. तो ऐसे स्टोमेटा को कहते हैं डिफॉर्म्ड स्टोमेटा. सिमिलरली इंक्रीज इन लीफ साइज, ये भी इन विट्रो कंडीशंस में होता है. तो इन विट्रो प्लांट मिक्सो ऑटोट्रॉप होते हैं, उनका स्टोमेटा डिफॉर्म्ड होता है या नॉन फंक्शनल स्टोमेटा होते हैं, और उनकी लीफ साइज इंक्रीज हो जाती है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से खाना मिल रहा है, लेविश कंडीशंस में रह रहा है, तो उसको स्ट्रेस है ही नहीं, तो उसका ध्यान एनर्जी कहीं और डाइवर्ट हो ही नहीं रही है, तो उसकी लीफ साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट दिसंबर 2014 15 में क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू प्लांट टिश्यू कल्चर. A है friable callus provides the inoculum to form cell suspension culture. ठीक है, ये सही बात है. जो कैलस है उस कैलस को हम लिक्विड कल्चर मीडियम में ऐड करते हैं और उसको शेकर पे रखते हैं, तो सारी जो कैलस की सेल्स हैं वो डिस्पर्स हो जाती है, अलग अलग हो जाती है. तो कैलस की डेफिनेशन क्या है? लूजली अटैच्ड मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल इज कैलस. लूजली अटैच्ड, जैसे कैलस को आप पानी में डालोगे, मीडियम में डालोगे, लिक्विड मीडियम में, तो लूजली अटैच, तो सारी सेल डिस्पर्स हो जाएंगी. ओके. और फिर उसको आप शेकर पे रखोगे तो सारी सेल जो वो सेल सस्पेंशन कल्चर्स बनेंगे. ऐसा हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन में करते हैं. तो फ्राइबल कैलस प्रोवाइड्स द इनोकुलम टू फॉर्म सेल सस्पेंशन कल्चर. इट इज ट्रू. ओके. तो ए तो आना ही चाहिए, तो हम देख लेते हैं ऑप्शन 1 2 3 4. उसमें 4 में ए नहीं है, तो 4 तो इसका गलत आंसर है. ये तो आपको पता चल गया. तो अब आपको 3 पे ही कंसंट्रेट करना है. सेकंड पे कंसंट्रेट करते हैं. तो प्रोसेस नॉन एज हैबिचुएशन
refer to the property of callus losing the requirement of auxin and cytokinin during the long term culture. Means callus induce करने के लिए हमें ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन्स ऐड करने पड़ते हैं, तब जाके कैलस बनता है। अब आपने उस कैलस को फिर से सब कल्चर किया तो भी आपको थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म लंबे समय तक आपको कैलस को ग्रो करते रहें तो कैलस अपनी इंट्रासेल्युलरली ही ऑक्सिन साइटोकाइनिन सिंथेसिस स्टार्ट कर लेता है, और फाइनली 1 साल बाद यदि आपने उसको ऑक्सिन फ्री या साइटोकाइनिन फ्री मीडियम पे भी डाल दिया तो भी वो अपने आप डिवाइड होता रहेगा, नया कैलस बनाते रहेगा। इस फिनोमिनन को कहते हैं हैबिचुएशन। आपने देखा होगा ना, कई सारे ऐसे वर्कर होते हैं जो जैसे सब्जी काटना एकदम टेक्निकली और क्या बोलते हैं उसको, उस तरीके से काम करते हैं एकदम कम समय में, क्योंकि वो दे बिकम हैबिचुएट ऑफ डूइंग द सेम थिंग रेगुलरली। So similarly, if you grow the callus regularly on the medium, so soon the callus become habituate of that environment, and a point of time when the callus can divide independently without the presence of the growth regulators. So this is termed as habituation. This is also correct. So B is also correct. तो हम देखते हैं ऑप्शन थर्ड में भी बी नहीं है, तो हमें सिर्फ हमारे पास 2 ऑप्शन रहे A1 and 2, जहाँ पे ए और बी दोनों हैं। थर्ड देखते हैं, सेलुलेज एंड पैक्टिनेज एंजाइम्स आर यूजुअली यूज्ड फॉर द जनरेटिंग प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट कल्चर में आपने देखा होगा, है ना, ईसी कॉकिंग ने 1960 में सबसे पहले माइरोथिसियम वेरुकारिया फंगस से सेलुलेज एंजाइम आइसोलेट किया था, और उस एंजाइम से उसने प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन किया था। तो प्रोटोप्लास्ट का एंजाइमेटिक मेथड आपने पढ़ा ही होगा, जिसमें कि हम यूज करते हैं सेलुलेज। तो सी भी करेक्ट है। तो ए बी सी तीनों किस में है? सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। यस, इसका आंसर पहले ही हो गया। Now the somatic embryogenesis. Okay, this question June 2015 में पूछा गया है। Somatic embryogenesis is an important exercise in micropropagation and genetic engineering of the plant. Okay, somatic embryogenesis, ठीक है। The following steps are considered as critical for achieving somatic embryogenesis. अच्छा, तो ये मैंने आपको उस समय बताया था। Reducing the concentration of sucrose in the medium by half. सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कब होता है? जब प्लांट स्ट्रेस में हो, ठीक है। दूसरा, जब ऑक्सिन मीडियम में हो, ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रखो। क्या? प्लांट स्ट्रेस में हो। तो स्ट्रेस कब हो सकता है? जब न्यूट्रिएंट हम कम कर दें। तो इसका ऑप्शन क्या है? रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज इन द मीडियम बाय हाफ। तो यदि पहले हम किसी मजदूर को 4 रोटी खाने के लिए दे रहे थे, फिर उसको कहते हैं 4 की जगह 2 रोटी देंगे, तो ये क्या है? उसके लिए स्ट्रेस होगा। सो द टू विड्रॉ द सुक्रोज फ्रॉम द मीडियम इज ए स्ट्रेस। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज इन द मीडियम बाय हाफ, इट इज करेक्ट। ये इसमें जो रेड दे रखा है ये सही नहीं है, इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। इसका आंसर ये नहीं होगा, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। सो ए इज करेक्ट। तो ए कहाँ है? 1, 2, 1, 3 and 4, 2 तो गलती है। दूसरा, एडिशन ऑफ हार्मोन 2,4-D। 2,4-D क्या है? ऑक्सिन है। तो हमने पढ़ा था ऑक्सिन में, ऑक्सिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैलस इंडक्शन, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस एंड इन विट्रो रूटिंग। यस, तो हमको ऑक्सिन ऐड करना पड़ेगा। तो बी इज ऑल्सो करेक्ट। ओके। सी, रिड्यूस द अगार कंसंट्रेशन टू 0.6%। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगार इज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट। अगार डू नॉट हैव एनी रोल इन मल्टीप्लिकेशन और डू नॉट हैव एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू। सी इज इनकरेक्ट। तो जहां जहां सी है वो गलत है, तो 1 and 4 दोनों गलत हैं। डी है, यूज माल्टोज इन प्लेस ऑफ सुक्रोज एज ए कार्बन सोर्स। तो हमेशा याद रखना, प्लांट ऑटोट्रॉपिक होते हैं। प्लांट सुक्रोज या स्टार्च को एब्जॉर्ब करने के लिए ज़्यादा एडवांस्ड नहीं है, क्योंकि वो खुद बनाते हैं।
हमारी बात करें तो हमारे इंटेस्टाइन में और हमारी सेल्स में ये एबिलिटी है फ्रुक्टोज को, ग्लूकोज को, माल्टोज को उसको एब्सॉर्ब करने की। ओके, यदि जनरली हम टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज के ट्रांसपोर्टर्स प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है जो सुक्रोज को एब्सॉर्ब रेडिली कर लेते हैं। सुक्रोज के बाद दूसरा यदि आप यूज कर सकते हो तो वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज भी नहीं है तो आप फ्रुक्टोज यूज कर सकते हो। सबसे बेस्ट जो रिजल्ट्स हैं वो सुक्रोज में आते हैं, लेकिन स्टार्च और माल्टोज यदि आप यूज करेंगे तो स्टार्च आप कितना भी यूज करें प्लांट उसको मीडियम में से एब्सॉर्ब नहीं कर पाता, ठीक है, माल्टोज भी नहीं कर पाता है। यदि आपने माल्टोज ऐड कर लिया तो एक्सप्लांट मर जाएगा, ठीक है, तो इसलिए सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस हो ही नहीं पाएगा। तो सी और डी गलत हैं, ए एंड बी इज करेक्ट। अब ये प्रोटोप्लास्ट है लेकिन हमारे पास समय अब खत्म हो गया है, तो मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ जो आपके साथ शेयर कर सकूँ कुछ और हो, जो कभी हमको और मौका मिलेगा तो हम बात करेंगे। ये तो छोटे क्वेश्चन है जो आप कर लेंगे। मैं CSIR के क्वेश्चन आपको बताता हूँ। यस, फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, a technique which is used for plant improvement। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जब हम कराते हैं तो सोमेटिक हाइब्रिड्स बनता है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, 2014 में पूछा है, the protoplast of only sexually compatible plant species can be fused। नहीं भाई, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन खोजा ही इसलिए गया था ताकि हम सेक्सुअल इनकॉम्पिटिबिलिटी को, बैरियर को क्रॉस कर सकें, है ना। क्योंकि हम जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट है उसमें पोटैटो और टमाटो को फ्यूज नहीं करा सकते हैं, उनका ब्रीडिंग नहीं करा सकते हैं, तो हम उन दोनों का प्रोटोप्लास्ट लेकर के फ्यूज करा देते हैं। ओके, तो सेक्सुअली इनकॉम्पिटिबल प्लांट हैं उनमें भी प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हो सकता है, हाइब्रिड बन सकता है, तो ए तो सही नहीं है। ओके, प्रोटोप्लास्ट तो यहाँ पे जो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, जहाँ जहाँ ए है वो इनकरेक्ट है, तो 1 और 3 तो ये गलत हो गए। हाइब्रिड आर प्रोड्यूस्ड विद वेरिएबल एंड सिमेट्रिक अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्लांट स्पीशीज, सही है। जब भी हाइब्रिड बनता है तो हमें पता है कि कुछ क्रोमोसोम्स या कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम एक पेरेंट का डिसअपियर हो जाता है, तो वेरिएबल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल रहेगा, बी इज करेक्ट। तो सेकंड एंड फोर्थ दोनों में बी है, तो इन दोनों ऑप्शन में से एक सही होगा, ठीक है। सी ऑप्शन क्या देखते हैं, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन परमिट्स ट्रांसफर ऑफ जीन ब्लॉक और क्रोमोसोम्स, ये भी सही है। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होता है तो पूरा न्यूक्लियस जाता है, जीन का पूरा ब्लॉक भी जाता है, पूरा क्रोमोसोम भी जा सकता है, ओके, तो ये भी सही है। तो बी एंड सी दोनों करेक्ट है। डी को देख लेते हैं एक बार फिर से, जीन्स टू बी ट्रांसफर्ड नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड एंड आइसोलेटेड, ये तो हमने कहीं देखा ही नहीं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में कि हम पहले यही जीन जाएगा या फिर यही क्रोमोसोम जाएगा, तो डी इज इनकरेक्ट। सो बी एंड सी आर द करेक्ट, सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। इसके बाद कुछ जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड भी चाहता था लेकिन ये अभी हो नहीं पाएगा, इसके कुछ क्वेश्चन हो तो हम देख सकते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चंस तो आप कर ही लेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। चलिए ये कर लेते हैं। एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन वाज यूज्ड टू जनरेट ट्रांसजेनिक प्लांट, ओके। तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखा होगा, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या है, एग्रोबैक्टीरियम मेथड, इनडायरेक्ट मेथड क्या है, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड मेथड। तो किसी प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन किया गया, राइट। एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन मींस इनडायरेक्ट मेथड। उसमें जो टी-डीएनए रीजन है, ट्रांसफर डीएनए, उसमें हमेशा एक तो हम मार्कर जीन लगाते हैं और एक दूसरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको पैसेंजर जीन कहते हैं। तो जो जीन कंस्ट्रक्ट हमने तैयार किया था उसमें मार्कर जीन था जो एक्स और दूसरा पैसेंजर जीन था दैट इज वाई, ओके। सो दिस वाज ट्रांसफर्ड। हमने 8 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन लेवल ऑफ वाई प्रोटीन मींस जो टारगेट जीन का प्रोटीन था उसका एक्सप्रेशन लेवल 8 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में, 8 डिफरेंट ट्रांसजेनिक एक्सपेरिमेंट प्लांट डेवलप हुए उसमें देखा। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ में हर प्लांट में सेम एक्सपेरिमेंट किया है आपने, ठीक है।
8 डिफरेंट अलग एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन सेम एक्सपेरिमेंट है, सेम जीन कंस्ट्रक्ट आपने ट्रांसफर किया है, लेकिन एक्सप्रेशन लेवल डिफरेंट है। मीन्स जैसे आप देखिए फर्स्ट जो ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप हुआ उसमें एक्सप्रेशन लेवल वाई का इतना ही है। एक्सप्रेशन लेवल मीन्स अमाउंट ऑफ द प्रोटीन प्रोड्यूस, तो इसमें कम प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है, थर्ड में सबसे कम है, फिफ्थ में सबसे ज़्यादा है। तो आप ये पूछना कहना चाह रहा है कि ट्रांसजेनिक प्लांट अलग अलग एक्सपेरिमेंट में सेम तरीके से किया गया, सेम जीन कंस्ट्रक्ट यूज किया गया। जीन कंस्ट्रक्ट में एक्स जो था वो मार्कर जीन था, वाई जो था वो पैसेंजर जीन था, टारगेट जीन था। ओके, तो ये हमें पैटर्न ये मिला एक्सप्रेशन जो टारगेट जीन का। सो फॉलोइंग कुड रिप्रेजेंट, ऐसा क्यों मिला? So following could represent the probable reason for the observed variability in the transgenic expression level. Okay. First ये option दे रहा है position effect on the passenger gene. Yes, ये सही है। Position effect क्या कहते हैं? Means जब एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो वो जीन कंस्ट्रक्ट होस्ट प्लांट के जीन कौन से क्रोमोसोम के कौन से जीन पे जाकर के, कौन से डीएनए में कहाँ पर जाकर के इंसर्ट होगा ये फिक्स नहीं है, ये हमें नहीं पता है। तो वो हो सकता है एक एक्सपेरिमेंट में क्रोमोसोम नंबर 1 पे जाकर के इंसर्ट हुआ, दूसरे में क्रोमोसोम नंबर 3 पे हुआ। तो अलग अलग क्रोमोसोम में जीन्स का एक्सप्रेशन लेवल अलग अलग होता है, इसको कहते हैं पोजीशन इफेक्ट। मींस यदि जीन्स की लोकेशन क्रोमोसोम में चेंज हो जाए तो उसका एक्सप्रेशन डिफरेंट आएगा, दैट इज टर्म्ड एज द पोजीशन इफेक्ट। ओके, सो ए इज करेक्ट। सेकेंड, ट्रांसजेनिक साइलेंसिंग ऑफ द मार्कर जीन। देखिए हमारे पास कंस्ट्रक्ट में 2 जीन है, एक तो मार्कर जीन है और दूसरा पैसेंजर या टारगेट जीन है। यदि मार्कर जीन साइलेंस हो भी जाए तो जो पैसेंजर जीन के एक्सप्रेशन लेवल पे कोई अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, वो उसको अफेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए बी तो इनकरेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन वेरिएशन इन द कॉपी नंबर ऑफ द पैसेंजर जीन, दिस इज करेक्ट। कॉपी नंबर मींस एक जीन की कितनी कॉपी इंसर्ट हो रही है। तो एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं, हम वी आर नॉट श्योर कि जीन्स की कितनी कॉपी इंसर्ट हो रही है। तो यदि प्लांट नंबर 1 में यदि 10 कॉपी इंसर्ट हुई, प्लांट नंबर 3 में 1 कॉपी इंसर्ट हुई और प्लांट नंबर 5 में 50 कॉपी इंसर्ट हुई, तो ऑब्वियसली जिसमें कॉपी नंबर ज्यादा होगा उसमें टारगेट जीन या पैसेंजर जीन का एक्सप्रेशन लेवल ज्यादा होगा। तो सी इज ऑल्सो करेक्ट। डी है एमआरएनए इंस्टेबिलिटी ऑफ द मार्कर जीन। तो यदि मार्कर जीन और पैसेंजर जीन तो दोनों टोटली रिलेटेड है ही नहीं, तो मार्कर जीन का एमआरएनए लेवल यदि एमआरएनए इनस्टेबल भी है तो उसका पैसेंजर जीन के प्रोटीन एक्सप्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एंड सी, दिस कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। ओके, देयर आर लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस आर देयर बट the time will not permit us to, because it is always already 10 past 12. So I stop my sharing here and over to the madam. Thank you, sir, so much on behalf of Navrajna University for presenting and explaining the students about all these concepts of plant tissue culture. Thank you very much again. And I hope everyone would have taken this session seriously and have looked into all the concepts which sir has taught. Okay. So with that, we will see you in the next session. That is from session number 2 for the day. That is, we will begin at 2 to 4. So thank you everyone from Navrajna University. Thank you once again, sir. Thank you. Yeah. Elizabeth ma'am, should I stop the recording? Yes, stop it. Yeah. Yeah, and then you can leave. Yeah. End